Everybody क्या कर रहा है? Hello, welcome to Taaza Transfers. Nitin bro, I hope you got your answer कि हम क्या बात कर रहे हैं. We are going to talk about beautiful transfers that are happening. So Nathan will be shut up for the whole video because there is nothing going on with Manchester United, to be very honest. On the other hand, Liverpool is doing business. मतलब surprisingly लिवरपूल से एक बहुत बड़ा उनका तुर्क का इक्का चला गया था. उसके बारे में पूछूंगा सोनू से कि भाई आपको कैसा लग रहा है, आर यू इमोशनल अबाउट दैट. और मैं आपसे पूछूंगा क्या 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 कर रहा है, क्या जा रहा है, क्या तुमको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है. और भाई फीफा की अगर आपने मेरी स्ट्रीम नहीं देखी तो मैंने पूरी फीफा में ऐसी बात करी थी बिकॉज एंड पीपल वर सेइंग बिकॉज इट्स प्राइड मंथ यू आर टॉकिंग लाइक दैट. But it's No, not no, like. it's because he was hanging out with American people. That's Yes, why he was talking like this. actually, I'm quite popular in India and outside of India as well. Nathan is quite surprised with my charming skills. But nevertheless, दोस्तों जल्दी से आ जाओ, लाइक का बटन दबाओ. मैं पहले सोनू और नितिन भाई से कहूँगा कि एक टैब में हमारी स्ट्रीम खोल लें और उसे चला लें, क्योंकि आपको पता है 2-3 व्यूज जितने भी आ जाए बहुत सही रहता है. आजकल तो यही ज़माना चल रहा है. हेलो RM टॉक्स ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? सोनू भाई, कितना was it emotional to see Mane go? Was it emotional? And हाँ. how do you think you guys are going to cope up with that? Yes. What question? Wow. ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैं रोया, बट हाँ बुरा लगा मेरे को. मतलब यार क्या चाहिए आपको, ऐसा प्लेयर जो फिजिकली डोमिनेटिंग, हमेशा फिट रहता है, ज्यादा चिक चैक पिक चैक भी नहीं करता है, हमेशा ऑलवेज सेवन. Doesn't smile much. Looks like a bit of a douche. हार्डली Oh, हार्डली हार्डली डाइज. hardly. मतलब तो यार, Hairline, बुरा तो the लगा यार. best hairline in all of football. अब But वहां तक की तो बात ही नहीं but करते. have to say भाई, माने की जो ओपनिंग कराई है बायन ने यार, बड़ा मजा आया. टॉप ऑफ द टेरेस और वहां से पूरा व्यू, वीडियो वाज क्वाइट गुड भाई. बट मैं इस पे एक तरह से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा. अगर टॉप 3 ट्रायोस की बात करें यार सोनू भाई, मतलब इससे क्वेश्चन मेरे ख्याल से लोगों को आंसर पता होगा. BBC, MSN और तुम्हारा जो था MSF, क्या था यार, मोहम्मद मदरफकर्स ब्रो, एमएफएस. मदरफक्स, ये ब्रदर, MFS. तो क्या लगता है तेरे को, ये तीन कहाँ कहाँ लाई करेंगे तेरे उस डिक्शनरी में या तेरे? इन तीनों को कंपेयर करोगे तो भाई थर्ड पे आएंगे. बट वैसे MFS, डू यू थिंक there is going to be any trio like this in the near future for Liverpool? मतलब मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, बट मुश्किल है. मतलब अगर आप प्रीमियर लीग में बात करो तो हाँ, मतलब कंफर्टेबली टॉप 3 फ्रंट थ्रीज में आ जाएगा ये. मैं तो टॉप 3 में रखता हूँ तो. नितिन भाई, अब आवाज आ रही है क्या यार? एक बार जरा, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको अच्छे से? Yeah. Can you- सस्ते में मस्त माल मिल गया बायन को. हाँ भाई, मतलब बायन के लिए तो इट्स अ वेरी गुड डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों. मतलब फ्रंट लाइन ऑफ 40 मिलियन है. 40 मिलियन में आपको क्या ही चाहिए भाई. हम 34 में लाए थे, 40 में बेच रहे हैं, तो टेक्निकली हमारे लिए प्रॉफिट है. बट इससे कहीं ज्यादा. उनके लिए ज्यादा एडवांटेज है, इससे कहीं ज्यादा. क्योंकि यार अब माने पे प्रॉफिट लेके हमको वैसा उस टाइप का प्लेयर ही नहीं था माने ओवर द टाइम कि हाँ इससे हमें प्रॉफिट कमाना है या नहीं कमाना है. अगर वो अभी भी कम वेज पे मतलब रेडी हो जाता, जो कि मुझे लगता है कि उसको नहीं होना चाहिए था, जो उसने सही करा, तो हम उसको रख लेते. ऐसा नहीं कि हम बेचने के प्लान से ही थे कि माने को बेचना है. भाई यार, जतिन भाई आके यहाँ पर अफवाह ना फैलाए प्लीज. और नितिन भाई, योर कॉल ऑन दिस माने डील. हु इज द विनर, हु इज द लूजर, बायन लिवरपूल? I mean, I don't think he should have gone, but you go to the German league to retire, so it makes sense. This is all banter when you are a Manchester United fan. Doesn't suit you. but yes, Sonu bhai, Nunez going to cope up for the blank, the void left by Mane. Do you think नहीं, so? उसके लिए तो लुइस डियाज है. मतलब ट्राई करने के लिए, टू फिल हिज बुक्स. ट्राई इज द मेन वर्ड हियर. नूनेज इज मोर ऑफ अ मतलब प्रॉपर सेंटर फॉरवर्ड, एकदम अटैकिंग. ज्यादा लिंक अप प्ले का मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ नूनेज से, जो फर्मीनो दिखाता है या इवन जो माने और साला जिस लेवल पे करते हैं. नूनेज इज मोर कि हाँ भाई अंदर बॉल डालो, मैं फिनिश करूंगा. तो लाइक ठीक है, अगर कर दे अपना 20-30 गोल सीजन निकाल दे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसी जर्मन टीम ने 2 साल पहले UCL जीता है, तो प्लीज शो सम रिस्पेक्ट नेथन बॉय. ऐसा क्या MSN in 3 seasons scored 20 more goals than motherfuckers in 5 seasons. MFS in the debate certainly. Lol bhai. Yeah, MSN played in La Liga. भाई इसमें तो मुझे बुरा मानना चाहिए, बट ठीक है, इट्स लिवरपूल वर्सेस बार्सिलोना.
तो मेरे को कोई ऐसा बुरा लगता नहीं. बट नितिन ब्रो, मैंने आपसे पूछा कि बट यार सर्टनली भाई, अगर आप सारे लीग्स की अगर आप बात करो तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एज वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर्स. तो भाई बायर्न एंड डॉर्टमंड, भाई किसी ने नहीं सोचा था कि these are the two teams who will rule the transfer market up till now भाई. Literally भाई. So, Nathan भाई, your views, because Dortmund can see Lewandowski going, और then they are saying कि भाई हाँ भाई इस सीजन चांस है. They have signed RDME, Schlotterberg, Sule, अभी they have Haller. signed Haller. भाई माय गॉड, भाई माय गॉड यार. एंड उसके बाद वो रूम का भी वो आ रहा है ना, क्या जो उनका फुल बैक है जर्मनी का, Rom, रॉम David रॉम Rom. रोम साहब. भाई बहुत ज्यादा ही वो है भाई. नितिन भाई, योर कॉल ऑन दिस भाई, डॉर्टमंड एंड बायर्न. एंड फिर उससे दूसरी तरफ And बायर्न. it's really impressive. I'm sure they're going to finish in the usual second place, even though they did all that. So it's very impressive. नहीं, I एंड mean, Sebastian Haller is world class. When he's not playing in the top 5 leagues. भाई मतलब मैं ये कह रहा हूँ, लोग तो पागल हो गए. ईपीएल वर्सेस भार्गव भाई, तो उसी लालिगा टीम ने इस साल टॉप 3 ईपीएल को पेल Yeah, दिया. अबे so he यार. bought. Okay, hold on. So wait, यार okay, नहीं so शुरू wait. करना यार, He ये bought. He वापस bought. नहीं शुरू करना है. Wait, hold on. Okay, so Dortmund bought Sule, who Bayern don't want. नहीं Raum from Hoffenheim. नहीं, एक्चुअली सूले वाज Schlotterbeck द. from Freiburg, and Haller from Ajax. How is that? If you can explain to me how is that impressive, I would love to hear it. नहीं यार, कम ऑन. सूले वाज द ओनली डिफेंडर हु लुक्ड लाइक डूइंग एनीथिंग फॉर बायर्न लास्ट सीजन, who was the only stump, who was the only pillar in their defense. So it is not like कि Bayern wanted him to go. It was more like Sule wanted to join Dortmund. And on the other hand, Schlotterberg is among the top 3, you can say, upcoming defenders in the world. So it's a very very good signing, and you will definitely see him going to a big club after 2 or 3 seasons. Maybe the next season, because he was the defender talked most about in the Bundesliga. And you don't see generally क्या कहते हैं Bundesliga providing good defenders, if I'm not wrong दोस्तों. I can be. You're very wrong because you bought a lot of German defenders back in the day. Not directly from, I'm not talking about Germany, I'm talking about the German league. Huh? Rudiger, You I bought know, them from the German league. like for Christoph Metzelder. Oh, that's too long back. I'm talking about right now, na. But that was It's a a long Galacticos back. time, na? Yeah, but I'm talking right now. No. Last 5 years. Right now, last 5 years. Last 5 years is difficult. मतलब, come on, Slaughterberg. यार I देख don't यार, know. डिपेंड See, I think डिपेंड सी इट डिपेंड्स. देखो यार, बुंडेसलीगा में टीमो वर्नर जब खेलता था तो वही ऑनरी तो के कह लेवल पे खेलता था, नहीं, वही मतलब तो कह रहा हूँ जो यार. मतलब जो वो होता था. नहीं सोनू भाई. एंड प्रीमियर लीग में आया तो फिर क्या हो गया. अभी जैसे हमने हालैंड की बात करी, दी okay. दी द बेस्ट स्ट्राइकर. Before you continue, no, I want to ask you and Sonu. Uh, Jayan said Sule, they didn't want to get rid of Sule. Sule wanted to leave. So I'll ask you just a simple question. Why would Sule want to leave to the team that always they finish behind? मतलब maybe because this time he thinks कि No, आगे come चला on, जाए. no, Come man, on no, यार. मतलब यार देखो no, come on, no, don't do that, bro. भाई, because maybe he's not liking the Dude, team you he's you playing know it, for but you right know now it, यार. but Come you on. know it, It but was you know not. it doesn't add up, dude. But it doesn't add up But it if you was, think about yeah, it. it was not like Sule was not starting each and every game. Sule and No, I'm not saying he was bad. I'm just saying it is not an upgrade. It's an upgrade for Dortmund, but Dortmund finished second anyway, so they're going to finish second again. maybe It's not really an upgrade. नहीं, you never know. If you never know the kind of No, signing come they on, have dude. made. They lose The, by 10 points every year. yeah, Every year they they lose by do 10 points, they dude. do, but maybe that's why they are making such beautiful signing this year, because they want to change Dude, the fortune. when they had Aubameyang and Lewandowski, that's when they managed to win a league, dude. That's crazy. They always fall short, dude. It's mad. I don't know. I don't find it impressive, but if it works out good for them, dude, they made some good deals. You know, What दोस्तों, they, मतलब चूहा मैनी is also here and everybody is here. It feels good to see everyone back after so many days. ये तो मेरी पसंद की स्ट्रीम है. ये तो मेरी hello guys, hello buddy. And चूहा मैनी is saying if you want to prove, let's make a super league, then it will be proved which league is better, Premier League or La Liga. Let's see. it'll never ever be La Liga. You're full of our rejects, dude. It is Oh, what it is.
It is But what it still, is, but why still are the we pretending it's the truth? still the team But of it's the truth. rejects क्या कहते हैं, defeating each and every top 3 team Bro, to win it the still doesn't Champions change the League. fact that they couldn't handle our league, dude. And It just doesn't change the fact. and you couldn't handle That's the our problem. team. Dude, you're one team, dude. I'm talking about the league. The league as a whole, dude. I don't think you have ever heard me the words Real Madrid are crap, dude. I don't think you have ever heard me say those words. You cannot say When I that. say those words, no, we will have this argument. नहीं But यार, up till today, I've not said it. but come on, then Villarreal did very good in the Champions League this season. They made it to the semi-finals of the Champions I League. think I mean it's Villarreal after we beat them both like I don't know what to say, dude. Bayern Come Munich. on, bhai. नहीं, Seriously, you Bayern did Munich. you did Fucking hell, dude. you did beat them, but then Villarreal defeated Dude. यार their यार, ये ex. तो अच्छा Bayern तो Munich, देख, they अच्छा beat तो Bayern Munich बेनिफिका भी and खेली ना Juventus. यार, तो इसका नहीं मतलब अच्छा क्या, खेली, And but पोर्चुगीज लीग भी सेमीफाइनल बहुत बढ़िया है. नहीं, but सेमीफाइनल तक पहुंची ना. That is fact of No, no, कुछ no. ऐसा you can't Whatever deny it is, whatever. yeah, definitely, They 100%. defeated Bayern Munich, yeah, to be very honest. And Juventus. And Juventus, bhai. And that too 3-0, 4-0. Oh, They, it's sad. That was sad. Seriously, I But don't know. यही चीज है. Villarreal defeated Juventus and Bayern Munich in the Champions League knockout stages. But if all these three teams were to be in a league, Villarreal would never finish above these two. हाँ वो तो ठीक है. Once in a blue moon. Maybe once in a blue moon. There is a chance. Once in a blue moon. हाँ, उसको लेके आप ढिंडोरा पीट सकते हो, कोई दिक्कत हाँ नहीं है भाई, भाई, वो कोई तो दिक्कत ही नहीं है. लेकिन डिंडोरा आप मतलब ये तो आपने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता दी, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि दैट इन द अरे यार चैंपियंस तुम लीग देखो ना दे यार, डिफीटेड तुम प्रे, तुम प्रे, तुम प्रीमियर लीग देख लो, लेस्टर एक बार जीती है, उसके बाद कभी देखा तुमने लेस्टर को जीतते हुए? तुम ला लीगा देख लो, बारसा और मैड्रिड के अलावा एटलेटिको एक दो बार जीती है, उसके अलावा 17 टीम क्या कंपटीशन, बस पार्टिसिपेशन अबे सर्टिफिकेट भाई, लेके जाती है. लास्ट 4 साल में वी हैव 3 डिफरेंट विनर्स ऑफ द लीग. यू डोंट हैव. हाँ, हु आर और रियल बारसा एटलेटिको. हाँ, वाओ भाई वाओ तुम कैसे बोल सकते हो जो तुम्हारी वाओ. चार एक टीम ने 4 बार लीग जीती है पिछले 5 साल में. हाउ कैन यू इवन टॉक अबाउट दिस यार? हाउ व्हाट अबाउट तुम्हारी 18 टीम? तुम्हारी लीग में कभी 17th पोजीशन टीम ने लीग जीती है पिछले 10 साल में? भाई व्हाट इज दिस? पिछले 10 साल में हम अभी 5 साल की बात हमारे में लेस्टर नहीं जीती. Good, देखो, अगर very nice. ऐसे आर्गुमेंट डालने तो Very मैं भी nice. डाल दूंगा ये. वेरी नाइस भाई. तुम्हारे भाई पिछले That is true. Leicester, but that is true. Leicester went from भाई 17 to हमारी winning. मलागा I don't think anyone can do that. हमारी मलागा also had a very good run in the Champions League. They qualified for the quarterfinals and then they dramatically lost to Dortmund. तुम्हारी किसी ऐसी टीम में मैंने करता हूँ देखा. भाई- विलारियल भाई तुम्हारी भाई रेंजर्स यूरोपा फाइनल पहुंच गए, अबे क्या तुम्हारे- मतलब समझे इसका अबे मतलब? तुम्हारे टॉप 4 की बाहर तुम्हारी टॉप, मैं तो पिछले 10 साल की बात कर रहा था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ. तुम्हारे पिछले टॉप 4 को छोड़ के कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, ये बताइए. नहीं पहुंची ना भाई. Semi-finals, नहीं पहुंचे. Arsenal and Tottenham. Arsenal and Tottenham. नॉट दिस भाई, लास्ट 10 इयर्स की बात कर रहा हूँ मैं. हाँ भाई, एक टॉटनहम पहुंच भाई. दैट उस Last ईयर 10 में भी का दे वर इन Tottenham. सेकंड. लास्ट उस सीजन भी दे फिनिश सेकंड. जिस सीजन में पहुंचे दे वर No, सेकंड. dude. Not that year. Not that year. उससे पिछला Not they were that in the year. top The 4 bigger- only. They were in the top 4 only. They Hence were- they they were- qualified. they were in Hence the they top. qualified. They were- Hence they qualified यार. On the top. अब वो ले लेते हैं. बट इन ईपीएल मैं आपको उस पर आ जाता हूँ. सॉरी भाई अगर किसको लग रहा था. लेट मी रीड सब कमेंट्स क्योंकि ये बहुत अच्छा कमेंट्स सेक्शन होने वाला है गाइस. यू ऑल गेट रेडी बिकॉज यू आर टीमिंग अप ऑन मी. तो मैं एक बार देख लेता हूँ. नहीं यार, ईपीएल प्राइम मैड्रिड और प्राइम बारसा के सामने मुंह देगा. दैट्स वन. Which Prime Madrid? Which Prime Madrid? नॉट इवन प्राइम मैड्रिड. नॉट No, इवन no, but which Prime? Which prime Madrid are Madrid? we talking भार्गव भाई, about? Yeah, which exactly. prime Madrid? लिवरपूल से ज्यादा टफ तो सिटी देता मैड्रिड को फाइनल्स में अगर लिवरपूल की जगह सिटी होता. सोनू भाई, योर रिएक्शन ऑन दिस? उसके लिए फाइनल हो में सकता होना है. होता. City उसके हो लिए सकता है. उसके लिए नहीं फाइनल हो में सकता है. नहीं, मैं अग्री करूंगा, हाँ हो सकता है, क्योंकि फाइनल में तो कोई भी किसी कंपटीशन दे सकता है टफ भाई, क्योंकि वो फाइनल है. एंड लिवरपूल वर टफ कंपटीशन. हाँ ठीक है, आप मान लो, ठीक है हम हार गए. देखो मैं क्रेडिट नहीं ले रहा मैड्रिड से कि मैड्रिड हमसे जीत गई, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि हाँ भाई मैड्रिड ने लिवरपूल को हरा दिया, हेंस ला लीगा इज बेटर देन ईपीएल, मैं ये अग्री नहीं करता. हाँ ठीक है वो तो मैड्रिड टीम इज बेटर देन 2017 लिवरपूल वाली. दिस सीजन, आई अग्री. Nathan bhai, he's talking about 2017 Real Madrid. The BBC and the KCM, the Sergio Ramos, Varane. अब फिर आर्सेनल के इनविंसिबल्स ले आएंगे फिर तो वो भी यू नेवर नो कि हार जाए.
और मैं आगे के अच्छी कमेंट्स टीम्स पढ़ता हूँ. अच्छी टीम्स यूनाइटेड की भी आई हुई है काफी. But in PL also the 2007 teams. Champions League United, 99 United, 2007 United. But Who why? knows, It's a dude? very Who knows? interesting Who comment knows? by AVS Pariyar bhai, and let me read that. It's a very beautiful comment. दोस्तों do like the stream अब ताकि और लोग आ पाएं और ये जो बसट वाली स्ट्रीम शुरू हो चुकी है इसका पार्ट बन जाए. But in EPL also the teams that are out of top 6 cannot compete at European level. Face it. ऐसा तो नहीं है. The West Ham, Brentford can West beat Ham, Leicester, Villarreal. West Ham, Leicester, Wolves. They all went into the knockout rounds. Knockout rounds, yes. Yeah, and And but Leicester in particularly they finished 12th. but let's put it They went far. let's put it this way. Do you think that EPL this season has been out of out of their EPL, out of their safe arena? They have been the you can say the EPL has been the bottler league because EPL के सबसे ज़्यादा team were in the knockout stages and in the end no EPL team won anything. That's a fact. Do you agree with this, guys? Say yes with a smile. Yeah, हाँ yeah. देखो यार, नॉकआउट मैचेस है ऑफ कोर्स. ठीक है, मैं कुछ हद तक मान सकता हूँ कि हाँ भाई हमारे पास ज्यादा प्रोबेबिलिटी वाइज अगर 6 में से 5 टीम हमारी थी उसके बाद भी छठी टीम जीती तो हाँ, वी बॉट इट. आई एग्री. Because in the six semi-finals there were five English teams and everyone else हाँ had two teams max. हाँ, तो So आई एग्री भाई. कोई इसमें कोई okay, दो राय नहीं है sure. कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस खराब था चैंपियंस लीग में. I love बट you. देन तुम बोल दो कि हमारी लीग ही पूरी तक. देखो यार, कभी भी नॉकआउट और लीग दोनों बहुत डिफरेंट मैटर हो जाते हैं. हम भी अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि नहीं भाई हमें नहीं लगता, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एक मेट्रिक नहीं है जिस पे आप जज कर सकते हो कि नहीं दो नहीं. लीग्स को. Rahul Tiwari, Guardiola doesn't make every league a farm. Goes to the richest club, no, and then that's what happens. He went to ये Bayern ये Munich where there is no competition. He went to Man City where the finances available to him, there is no competition. And if he went to PSG, it's already a farmers league before he got there. So if he went to farmers league, Guardiola so if he went to PSG, you would say Guardiola no no French no league is no farmers league. Guardiola makes every league a farmers league with that amount of money, with that amount of transfers, with that quality of players. Still he could only get 1 point more than Liverpool, a team who is not even halfway there when compared in revenue. तो यार ये फार्मर्स लीग आप बोलते हो कि हाँ 5 सीजन में 3 बार, मतलब लास्ट 6 सीजन या जो भी 5 सीजन में 4 बार सिटी जीती. आप उसमें से देखो 2 बार उनको ना 70 मिनट तक हार रहे थे वो. इस सीजन के फाइनल 70th मिनट तक वो हार रहे थे. हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दे वन, बट दैट डज नॉट मीन कि पूरा लीग फार्मर लीग था. फार्मर लीग तब बोला जाता है जब आपकी जो टॉप टीम है पिछले 4 साल से जीत रही है विद अ गैप ऑफ 15 पॉइंट, 10 पॉइंट, 8 पॉइंट, 20 पॉइंट. ऐसा नहीं होता है भाई प्रीमियर लीग में. ना हुआ है पिछले 5 साल में. 5 बार तो नहीं हुआ है. एक बार हुआ जब सिटी 20 पॉइंट से जीती, एक बार हुआ जब लिवरपूल 20 पॉइंट से जीती, 18 पॉइंट से जीती. तो फार्मर्स लीग बोल देना कि पेप ने पूरा गेम ही बना रखा है, तो यार आपको एक वो देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने पॉइंट से टीम जीती है, क्या सिचुएशन में टीम जीती है. क्योंकि लास्ट के 20 मिनट इस सीजन के एंड के कुछ भी हो सकता था. हो सकता था आस्टन विला एक और गोल मार दे. नहीं हुआ, ठीक है, लोग बोलेंगे कि इफ्स एंड बट्स कर रहा है, बट देन दैट इज फुटबॉल भाई. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि विला 2 गोल पहले मारेगी. So Mohammad Zahir bhai is definitely a pro EPL. That's why he's a United fan, baby. He's a United I know fan he's and a he is United a fan. Barcelona fan. Let's go. अरे रे. He's a Barcelona fan and a United fan. Nathan bro, you can you can just stop smiling now. Interesting. Certainly Very on the interesting. overall team EPL is better because of equal money distribution and entertainment. नहीं यार Here देखो we जब go, Vamsi with the real facts, dude. Let's go. देखो when it comes to the broadcasting and everything, obviously EPL is the winner. If I don't agree to that, I'm मतलब blind or मतलब No, but it's not mad. even EPL is a winner, dude. I feel in a certain sense, no, the teams get a more fair shake. Like they get money to spend that they might not necessarily have. Like in that way, it's not even about the EPL winning. It's more like okay, at least they're giving X amount of money guaranteed to a team And that can do something. you can also read the last comment of Vamsi. Please go ahead. Thank you. European glory, dude. Hold on a minute. In terms of European glory, we have 5 Champions League teams, my friend. 5 Champions League winning teams. So this season is the most stacked European Champions League season ever. All our champions are in the league, dude. So hold on, dude. Settle down.
Nottingham Let's Forest is go, back. Nottingham Nottingham. Forest, baby. And he's talking about Nottingham We're Forest, all in you. not Manchester City. We're all in So you, baby. We're all in you. Yeah, in no in one talks. recent Man years, City are zero. United have spent more than City in total. Uh, Actually, Still won in the nothing. last 10 years, I think we have spent 100 million, less than 100 million more than City, and we have actually won a league and a European league and FA Cup. And dude, the point is, whatever, dude. I mean, it's all right because this season itself, Man City is going to pass us in spending, so it's fine. That argument is already moot point. They've spent 70 million on Haaland already, so they have already surpassed us. And we have only And spent more than them in the last 10 years, but they will surpass us for sure this year. और So एक और ना लोगों को डाउट होता है जब हम बोलते हैं कि यार सिटी के पास बहुत पैसा है. सिर्फ वो चीज नहीं है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है. हाँ, वो मेजर चंक है, बट देन दे ऑल्सो हैव दैट टीम बिहाइंड की जो फालतू की साइनिंग्स नहीं करती. उनका मैनेजर वैसा है. hmm, दे गो इन विद मनी जिनको उनको पता है कि उनके सिस्टम में तो सिर्फ आप सिर्फ पैसे को क्रेडिट नहीं दे सकते. ऑफ कोर्स आपके पास पैसा है तो आप अपने पसंद के प्लेयर ले सकते हो, वो चीज भी है. बट देन हमने ये भी देखा है कि बहुत पैसे होने के बाद भी अच्छी साइनिंग्स नहीं होती हैं. कभी कभी कुछ साइनिंग्स बहुत महंगी जाती है लेकिन फ्लॉप हो जाती है. आप लुकाकू ले लो. इवन विद ग्रेट टीम्स, चेल्सी ने बहुत उम्मीद से लुकाकू लिया, फ्लॉप. इवन मैड्रिड बहुत उम्मीद से हजार्ड लिया, अभी तक नहीं परफॉर्म कर पाया. तो ये तो कभी सर्टेन होता नहीं है कि मोर मनी गारंटीज यू मोर सक्सेस. बट सिटी not only has more money, they also have the people with more brains and more, technical superiority. definitely, their backroom staff is one of the best in football. Period. hmm. In football, whatever the league is. Bhargav, Oh, also, totally agreed. more teams to win UCL. What is the point if half of them are mid-table and relegation teams? Vamsi, that is football. The best team in France right now does not have a European trophy to their name. They will There never. are, They I will never believe, have. I believe there are two teams in France that have won the UCL, and one of them was in grave danger last season. So that's just football. So I can't really But let's move make on any to other excuse. let's It's move just on to football. transfer जिसके बारे में ये स्ट्रीम थी वैसे एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट रियल ला लीगा वर्सेस वो. बमसी भाई पॉइंट तो वही है ना कि अदर देन बारसा एंड मैड्रिड इज देयर एनी टीम ऑफ लगा जिसने यूसीएल जीता है. हाँ वेलेंसिया भाई. No, what? Ah, yes, Palan. वेलेंसिया है भाई जीता है यार. और एथलेटिको मैड्रिड इन द लास्ट 2 years हैव last 10 years have played a good amount of finals. They have played 2. Yeah, but even Dortmund have been in finals. Yeah, तो मतलब that means the team is good. That मतलब I it's mean, not like भाई come on, Liverpool reaching 3 finals last 5 years means they are good enough. मतलब come yeah, on. but Dortmund reaching 2 in 12 doesn't mean they're good. But then Atletico Madrid were like in 2 finals in 3 years, if I'm not wrong. So Hmm. that meant something. Please That was good. get a Yeah, fact yeah. checked No, right. Atletico Madrid is a good team. Good team, yeah. Come on, Manchester United will know they defeated them this 100%. year. I mean, they're absolutely shit to play watch football, but they're a very good team. I would never watch a मतलब Atletico let's Madrid अगर आपको फैक्ट्स की बात करिए अबाउट फाइनल्स match, लेट मी but गिव यू अ फैक्ट. La Liga teams in the last 20 years have qualified for 17 finals in the European competitions, and they have won 17 times. Factos. My goodness. That's some stat, yaar. That's some fact, bhai. Come on, guys. You have to say that. But good. let's Yeah, move yeah. to transfers. And talking about transfers, let's talk to Nathan. Nathan, bro. Manchester United. Let be honest here, Manchester United just focusing on FDJ, they are losing all the other options in the market. Don't you think so? It will be great if you get FDJ, but Kamara is not there in the market. Basuma is not there in the market anymore. What are the other options you see, and what do you see Manchester United doing right now? See, it's really difficult to say, right? Because on one hand, I want to say I'm a United fan. I don't really care just about the players. But at the same time, as someone who has complained about Solskjaer not getting back or getting the wanted, I'm not talking about funds. I'm talking about player he wanted. Van Gaal not getting the player he wants. Mourinho not getting the player he wants. Ten Hag wants Frankie de Jong, so I have to, as someone, because the manager craze is becoming insane, the turnover. As someone who has to back the manager, the only way I can reason it.
For me, as a United fan, I don't like this. I don't want to pander to Barcelona. They have a lot of Premier League rejects. I am not taking a shot, dude. Wherever you're successful in your own personal career, good for you. But as a person on the outside looking, I don't really like this. But at the same time, if the point is to back the manager, back the philosophy, you have to sit there and wait for it because he wants. So as a person who is trying to be level-headed about it, not getting his pride in the way, don't like how we are going about the transfer market personally. You have to back it because that's what he wants. Otherwise, if we get someone he doesn't want, then he has an excuse that we are not doing well. The management has an excuse of we couldn't get them. We got someone else for you. Here, take it. We have financial issues and all this. So, in a very biased stance, I have to say that I back his ideology of getting De Jong. But quite honestly, I would have spent 30 million and just got Edson Alvarez. We are in such a situation now that Ajax has either have so many free agents who have left, so many free agents who have been sold, and now so many free agents that so many players that do not want to be there now because they are getting attention from other clubs. That Ajax are going to add 10, 15 million euros or 10 million pounds on all the deals. So because we have waited so long now, we have actually lost traction on Timber. Anthony still wants to come, thank God. I don't know what is going on. It looks like we are going to get Anthony. Timber might not be interested. He might be getting Lisandro Martinez, who's his centre back partner, which I don't really mind. He's 24. It looks like he might get right into the team, which I actually prefer because I don't want to get another substitute centre back. And what is more annoying is Edson Alvarez from Mexico, who's the CDM mostly in Ajax. He might be going to Inter Milan for 30 million, which is very frustrating considering what we are doing right now, waiting for De Jong. Because if we don't get De Jong, we are jacked. We might have to get Ruben Neves. Wolves is going to rob us the same way every other English team robs us when we want a player. So Edson Alvarez wants to go to Inter. I don't know why. I mean, Lukaku is there. He can just play DM now. He has no touch anyway. So so that's what I'm saying. So I don't understand the strategy here, but at the same time, if we don't back the manager, there's no point. Then there are again inbuilt excuses. Glazer's fault, manager didn't get players. So I don't like it, but we have to back the manager what he भाई wants. सोनू भाई मतलब अगर तू अभी अगर ट्रांसफर विंडो बात करेगा तो ये बात सही है ना कि अगर टॉप सिक्स की बात करें ईपीएल की तो सिक्स पे मैनचेस्टर यूनाइटेड होगी गिवन द that they have not signed any player, and on the other hand Tottenham are having a fairyland मतलब ड्रीमी काइंड ऑफ अ ट्रांसफर विंडो, और आर्सेनल भी अब अच्छे प्लेयर साइन कर लें एंड दे आर इन कांटेक्ट विद गैब्रियल ह्यूसूस, और ऊपर से चेल्सी एंड मतलब क्या होगा तेरा टॉप सिक्स बेसिकली? मैं तो कहूँ कि चेल्सी और यूनाइटेड साथ साथ में ही है, बट नहीं, चेल्सी एक ऊपर रहेगा क्योंकि एटलीस्ट उन्होंने लुकाकू बेच दिया, तो हाँ, एडवांटेज टू चेल्सी, एडवांटेज एडवांटेज टू चेल्सी। बट यार देखो, मेरे को पता है, मेरे को लगता है ना यूनाइटेड की किस्मत ही खराब है। जब इनके पास पैसे थे तो इन्होंने मैनेजर को बैक नहीं करा। अब जब इनके पास मैनेजर को पता है कि कौन सा प्लेयर लेना है, तो फ्रैंकी डे जॉन्ग के केस में कि उसको नहीं आना है यूनाइटेड, ही डज नॉट वांट टू कम, दैट इज आल्सो इशू हियर। क्योंकि यार अब टेक्निकली कोई चैंपियंस लीग फुटबॉल क्यों छोड़ेगा, और ये बहुत मतलब ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज है ना अभी यूनाइटेड के लिए, दैट दे डोंट हैव चैंपियंस लीग फुटबॉल, मतलब द सेम because of Champions League football. Why is not to United? Because of Champions League football. और ऐसे अगर आपके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन दूसरी टीम्स वो दे, तो मेरे को नहीं तो कोई भी प्लेयर अब उसको मना कर पाएगा, क्योंकि ओवर द इयर्स हमने ये भी नोटिस करा है कि देखो यूनाइटेड का प्लेयर पुल भी कम हो गया है बिकॉज ऑफ द रीसेंट परफॉर्मेंसेज ओवर द इयर्स, जो पिछले 2-3 साल में है। उनका वो जो पुल होता था यूनाइटेड का पहले कि एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले फॉर यूनाइटेड एट सम पॉइंट ऑफ द करियर, खाली मिल जाए एटलीस्ट करियर में, कि हाँ तो बार, तो अब नहीं रहा वो, क्योंकि अब जब हमें दिख रहा है कि इतना डिसऑर्गेनाइज्ड है हर चीज, तो फिर प्लेयर्स भी तो देखते हैं ना कि व्हाई वुड आई गो एंड जेपरडाइज माय करियर ऐसी टीम में जहां कुछ पता नहीं कि मैनेजर मौका देगा नहीं देगा, अगले साल इनके बोर्ड ने बैक नहीं करा तो फिर मेरे को दूसरा क्लब ढूंढना पड़ेगा। तो व्हाई नॉट गो फॉर स्टेबल ऑप्शंस भाई, हर बंदे को अपना करियर देखना है, अपना एंड में भाई अपनी अपनी कमाई सबको देखनी है।
तो उस वे में भी मेरे को नहीं लगता कि यूनाइटेड इज अ सेफ स्पॉट राइट नाउ। तो यार तीन चार फैक्टर्स है मतलब जो ओवर द इयर्स अक्यूमुलेट हो के इस ट्रांसफर विंडो पे जिनका लग रहा है कि हाँ सबसे ज्यादा असर होगा इस पे। नेक्स्ट पे मेरे को नहीं लगता ज्यादा होगा बिकॉज आई एम श्योर दैट दे वुड इम्प्रूव their परफॉर्मेंसेज अंडर एरिक टेन हैग। बट दिस समर ट्रांसफर विंडो तो हाँ भाई मेरे को लग रहा है कि उनको Oh, झेलना पड़ेगा। but that is terrible because they got I think Richard Arnold in a pub somewhere. They illegally videotaped him and they asked him a bunch of questions, to which he said basically said, "This year we have the money," which I find hard to believe. He's saying Hmm. next year we might not be lucky because we don't know where we are going to get sponsors. Also, I just want to answer one question. AVS Nathan by a reject plays as a reject. We sign good talent from EPL, not rejects. AVS, if you look at it, no, that is not actually true. I'll give you an example. Lo Celso, Foyt from Villarreal. Okay, if you watch their last season at Arsenal, they were terrible. This is facts. I'm not making fun of them. I give Villarreal the credit. They did fantastically well, no doubt. They made a good run with them. But if you watch them before they went to Villarreal, they were actually terrible. Uh, what else? Adama, Memphis Depay didn't really do anything at Manchester United, and we won the Europa League that year. And then he went to Lyon, Uh, not Barcelona. yeah, he didn't do well at Ali. And then Adama is the most on and off player Wolves have had in the last 5 years. When he's on, and when he's off, it's like I don't know what you're watching. You're watching like a fellow. He's very like Dan James, he's really fast, but there's no end product, in Then, a way. but we can also say So the same thing. For example, you see Trincao playing for Wolves. Then you see there was Ah, another. but I'm talking about like our top team rejects, dude. Like that throughout the league, we have a bunch of rejects. Now La Liga gives the rejects to Premier Premier like League, that. Even obviously. I know there are Huh. players. Of course, there are players like 100. But think about it, dude. Trincao at Barcelona, top team. Wolves, not so top team. Hmm. You know, that's his level. Now that's not bad. Wolves is a very good team on many days, but that's his level. He can never play for Barcelona. He's not going to go to Real Madrid from Wolves. Let me put it that way. You know what I mean? It's not an insult, dude. It just happens to be that case. Tomorrow, y'all might have a bunch of Serie A rejects that play fantastically well, and then the Serie A will say, they couldn't play in Inter Milan, but they play here. It's like that. It's not like an But insult. It's just, it's it, not an it just insult, but happened this way. uh, It but happened this way. It but I just, think it's happens both ways, not just yeah, you just yeah, but matlab, you notice it won't be a neutral thing. You know what I mean? I mean, like Manchester sold Depay to Lyon. Barcelona took Trincao to Wolves. Like that. It never ever goes cross the same level. Like we will not get unless your contracts are run out like Varane, we won't get a Varane to us. It won't go that way. You know what I mean? It you won't means go equivalent Real like that. Madrid reject will never go to Manchester United or to Man Not even City. a reject. Exactly. Very unlikely. But You have like to be a free agent. You Kovacic know? happened to go to Chelsea. Yeah. That was But dude, like the players you all had in your midfield, I mean, almost every midfielder would have been sold at that time. It's not even Kovacic's fault. He's playing really, he Odegaard plays to quite good Arsenal, at Chelsea. Ceballos to Arsenal. It was like I that. mean, Ceballos to Arsenal was crap, but Odegaard to Arsenal, actually a good deal. Huh, like Ceballos was actually terrible, but it's a good deal for Arsenal. Arsenal were eighth, dude. Y'all are like second all the time. Y'all are either first or second. You hmm. know, Arsenal is seventh, eighth until Dybala this being season. They're fifth. Dybala being linked to Real Madrid भाई मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट यार मैं इसमें ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऐसा कुछ मैंने देख रहा कि इतनी तगड़ी कोई सोर्स है एंड आई डोंट थिंक हिम फिटिंग इन रियल मैड्रिड मतलब ही इज़ अ गुड प्लेयर ऑब्वियसली अ गुड टैलेंट टू हैव ऑन योर बेंच मतलब ही इज़ Where's अ he going to स्टार play? या वही है राइट विंग पे शायद No, खेला है dude. You all will spend so much money on a bench player. It's इज़ not अ worth it. Yeah. फ्री ट्रांसफर ना Coutinho was Yeah, very but tough dude, the wage you all have a wage cap, right? In La Liga, it's not worth the wage cap, dude. Get some young players in there, man. Not worth it. and we have too many good AVS, Ronaldo. Well, we have a 1 year extension possibility. I don't think it will be extended though. This is technically his last year on the contract. We have a right to extend it, but I think it will only be extended at the end of the season at best. और भाई मैं भी So नहीं I चाहता don't. I think he will leave. I think he will leave he will after leave this final year. after this okay Yeah,
Yeah, because he has 2 years with an option of one. I don't think he will choose to extend हाँ. his contract. So This season I want Ronaldo to stay. But question to for both of you: do you think Ronaldo can score 18 goals again the next season? Because uh, it's going to be very it difficult. really, it really genuinely depends on what we get there. Like this, more than any season in this season, it really depends on what we get. If we do not fill the hole in midfield, I'm telling you right now, we're not finishing top four. It does not matter what Ten Hag does. It does not matter. I'm sure we'll play fantastic football with the crap we have, but I don't think we're going to finish fourth, Sonu even bhai, fourth. 18 goals at the age of 38. नहीं भाई, तभी तो रोनाल्डो है ना वो। हाँ, नहीं ये वर्ड अच्छी है, तो मेरी पसंद की बात करी है आपने। बट क्या लगता है तेरे को मारेगा 18? हाँ, बट टीम ऑफ द सीजन में नहीं होना चाहिए था। ओके, मेरे को ओके, लगता है कि हाँ, ओके नहीं या बिकॉज मारने की जगह ला रहे थे ना सॉन को, तो इसलिए नहीं देखो, होना चाहिए था। टेक्निकली अगर तुम रोनाल्डो का हटा के वहां पे सॉन डाल दो, तो मेरे को था कि आइडियल टीम, और थियागो अल्कंटारा हटा दो भाई, उसको भी नहीं होना चाहिए। भाई मतलब सॉन को स्ट्राइकर खिला देते, मारने को स्ट्राइकर खिलाते और तो सॉन, माने को स्ट्राइकर खिला दो, हाँ, लेकिन क्या मारने से दिक्कत है? बढ़िया स्टैट है उसके गोल हाँ, स्कोरिंग कितने वाइज। स्टार्ट बढ़िया है, हाँ, कितने स्टार्ट है, हाँ मैं तो गिनाऊं, मेरे को, मैं गिनाता हूँ, मैं 18 गिनाता है हूँ। उसके, उसके 15 है। हाँ, 18 गोल है और 2 असिस्ट, 3 असिस्ट है रोनाल्डो के। माने के 15 गोल है और 2 असिस्ट है। तो भाई पीछे रह गए ना। यूनाइटेड यूनाइटेड फिनिश करी अबे 6, भाई लिवरपूल। उस टीम में तो आके माने गोल मार दे उतने, भाई मैं मान जाऊंगा। वो मैटर, वो नहीं तो इस वो हिसाब क्यों से नहीं तो मैटर निक करता? पोप को दे दो, नहीं, निक पोप को दे देना चाहिए था ना हमेशा 4 साल से बेस्ट गोलकीपर, क्योंकि भाई बचा के रखता है वो बर्नली को। नहीं दिया, तो देखो कितने ऐसा नहीं घटिया होता, लोग हैं। हाँ, तो ऐसा वही है नहीं ना होता भाई, ना सर। ऐसा थोड़ी ना सर रोनाल्डो आपको पीछे, रोनाल्डो टॉप आगे ही है टॉप ना भाई। हाँ, लेकिन पोजीशन में जितना जितना गैप लिवरपूल और यूनाइटेड की पोजीशन में है ना, उतना इन दोनों के गोल डिफरेंस में नहीं है। समझ रहे हो तुम पॉइंट? अच्छा वो क्या बात है, ये ठीक है। पॉइंट है, नहीं नहीं ये तो ये ठीक है, पॉइंट है मेरा। लेकिन उसके असिस्ट भी तो मतलब बट देखो, एक ज्यादा है। अब देखो, मैं देखो, तीन तीन अगर टोटल गोल्स एंड असिस्ट का निकालो तो 3 का डिफरेंस है। हम्म, तीन तीन यूनिट बोलो या 3 नंबर आगे है रोनाल्डो व्हेन कंपेयर टू सादियो माने। हम्म। बट यूनाइटेड 5 पोजीशन नीचे है लिवरपूल से। तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट था, किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं लगेगा, बट देन भाई जो बना रहे हैं टीम वो वैसी इडियट्स है, तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपने सॉन को कैसे नहीं रखा, आई डोंट, फॉर मी सॉन गोज अहेड ऑफ रोनाल्डो एंड सादियो माने, बोथ। मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर सादियो माने नहीं होता और सॉन होता तो भी मेरे को ज्यादा इशू नहीं होता। मेरे को ज्यादा इशू है कि सॉन क्यों नहीं है। हाँ नहीं तो वही है सॉन, सॉन का, बट मोस्ट लाइकली वही था क्योंकि वो पोजीशन नहीं है माने की, देखो अगर आप मानो ना मानो। हाँ बट हाँ वही, वही तो, हाँ, तो अगर पोजीशन बायस है, मतलब अगर पोजीशन टू पोजीशन आपने डाला है तो हाँ ठीक है, तो टीम ठीक है। तो ऐसे बट देन हमने देखा है कि बैलन डोर में भाई आपने 4-4 फॉरवर्ड भी खिला दिए हैं, तो हाँ, अब पोजीशन के हिसाब से तो टीम बनती नहीं ना आजकल, मतलब काफी वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट नहीं है। और कभी टीम ये लोग कुछ और हिसाब से बनाते हैं। Barcelona interested in Jules Koundé. यस यस, Chelsea might not get it. So आई मीन भाई चेल्सी के लिए देख रहे हो तो उस्मान डेम्बेले ने बोला नहीं आ रहा, जूल्स कुंडे का, एक तो सब सारे डिफेंडर्स बाहर क्यों जा रहे हैं, भाई क्रिश्चियंसन ले लिया इन्होंने, भाई वैसे कुंडे ले लिया इन्होंने। एज अ रियल because मैड्रिड they'll फैन, get to start. No, they'll get to start. Their centre backs are like old and हाँ, slow बट and injured. No. पता है, ये चीज ना चीटिंग मेरे ऑफ द को ग्राउंड। एक सही एक चीज सही लग रही है, मतलब कि स्पेशली बार्सिलोना, मैड्रिड तो खैर अभी काफी सेटल्ड है और उनके मतलब प्लेयर्स हैं, बट बार्सिलोना इज लाइक कि अगला मेसी कौन होगा, मतलब अगला कौन बड़ा प्लेयर बनेगा हमारी टीम का जिसके अराउंड हम प्रोजेक्ट बनाए। तो उसके ना Well, होड़ में सब है कि भाई मैं बनूंगा मैं I बनूंगा don't think बनूंगा। that. I don't even think that's going to happen. I don't think anyone can build a team like that anymore. It would be very stupid to do that. Not like that, but then you still have to have a main player in your team, no? Yeah, their So main who will player is be the that main coach. player? Nah. Their main player is the coach. No, he feeds the Spanish team all the Barcelona players. No, for the Spanish team, he's the भाई main player for भाई Barcelona. लोग कह रहे हैं रोनाल्डो को होना चाहिए था बिकॉज व्हाट ही डिड, ही कैरीड द Oh, टीम in फॉर a अ होल shitty सीजन। team for हाँ, sure, आई for अग्री sure. यार, तो उस हिसाब से तो डहाया को भी कीपर ऑफ द वो होना चाहिए था। जब आप टीम ऑफ सीजन बनाते हो तो आप यार इंडिविजुअल उसके क्लीन परफॉर्मेंस शीट देखते हो। नहीं थे ना भाई उसके सबसे ज्यादा, मैं और ना ही लेकिन होंगे। लेकिन टॉप 6 में यूनाइटेड है ना, टॉप 10 के बाहर फिनिश करती है अगर डाया नहीं होता तो, और इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता है। और अगर रोनाल्डो नहीं होता तो रेलीगेट हो जाती। This is नहीं, the- तो देखो वही बात है ना कि आप जो अगर टीम ऑफ सीजन अगर बना तुम रहे हो अगर उसमें आप क्या इंक्लूड कर रहे हो वो मैटर करता है। मेरा पर्सपेक्टिव है कि देखो आप जो कंट्रीब्यूशन है वो आप, माने ने भी बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स भाई मारे हैं माने साला चला गया जनवरी के बाद। बायन, भाई मुंह खत्म कर भाई, सही कह रहा पांडे भाई। हाँ,
नहीं, मैंने तो बस पॉइंट अपना रखा, इन लोगों ने फिर चालू कर दिया तो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ कि मेरे को ऐसा क्यों लगता है। देखो, माने ने भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट गोल्स मारे लिवरपूल के लिए, जिसकी वजह से वो 1 पॉइंट का गैप था। आफ्टर जनवरी एंड फरवरी साला ने गोल नहीं मारे हैं। जो भी गोल्स मारे हैं, वो माने ने ही मारे हैं। तो कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो, अब वही है, एक टीम के एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है उसको रेलीगेट ना कराना, और एक टीम के एक प्लेयर का कंट्रीब्यूशन है उसको टॉप पोजीशन से 1 पॉइंट से पीछे रखवाना। अब उसमें प्रायोरिटी किसको दे पीछे रहे हो, आपके रखवाना, ऊपर है। अच्छा पीछे तो हाँ, रखवाना, देखा हाँ तो पीछे ही है, नहीं जीती वो ना। अगर करने जीत का। अगर जीत वही अगर देख जीत जाती तो मैं यही बोलता कि भाई एक टीम देख में उसकी तो भाई भाई। कंट्रीब्यूशन है उसको जिताना, ऑलमोस्ट जिताना, ऑलमोस्ट जिताना, और एक है कि रेलीगेट से बचाना। अब टाइम टीम ऑफ द सीजन में किसको रखोगे, वो आपके ऊपर एक टीम को तूने बोला कि इसका ये था कि 1 पॉइंट से पीछे रखवाना, वो 1 पॉइंट से आगे है। रखवाने का हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैच? ये क्या है, 1 पॉइंट पीछे रखवाना कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कुछ भी कह कि रहे। एटलीस्ट 1 पॉइंट का तो गैप भी था ना भाई। 17 पॉइंट से 16 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट का गैप तक आए हम लोग। गुड है भाई। Okay. Raktim is telling us to maintain order, please. Transfers. Let's talk हाँ about या transfers. प्लीज यार प्लीज भाई। हाँ But हाँ, before we talk about transfers, Deboshi says Salah is very overrated. Okay, now let's talk about transfers. सारा इज ओवर। या ब्रो, आई एग्री ब्रो, आई एग्री। ही डज नॉट फिट योर रेटिंग सिस्टम, आई एग्री। He does not. He does not. He's Egyptian. He doesn't count. He doesn't count in the FIFA rankings. Yeah, as usual, African countries don't matter, huh? Yeah. भाई मेरे ख्याल से तो भाई डे डेविल भाई माने को अगर लेवेंडोस्की जाता है तो स्ट्राइक ही खेलना चाहिए, क्योंकि इस सीजन पे हमने देख लिया ही कैन प्ले स्ट्राइक वेरी वेल और ही कैन स्कोर गोल्स। हाँ, गनाबरी और गनाबरी गनाबरी और साने, साने। कोमन कोमन और साने और माने। गनाबरी मेरे को नहीं लगता रहेगा। गनाबरी अगर He's रियाल free, चला no? भी गया I तो think he's going on a नेक्स्ट ईयर। free. I think this season. सलाह's Next season. माउथ इज ओवररेटेड, बिल्कुल बिल्कुल, आई डू एग्री विद दिस, आई टोटली एग्री विद दिस भाई। अब देखो इस पॉइंट पे Be भी मैं careful फिर next year. He'll यार, want to अगर take. एक He'll, बंदे he'll को want to take अगर revenge एक on me बंदे next को year. Okay. बुरा लगा है कि हाँ भाई मैं एक फाइनल में हारा, मेरे लिए एक रिवेंज की तरह है, मैं लेना चाहूंगा रिवेंज, नहीं ले पाया अलग बात है, बट वो लेना चाहता है, उसने दिल की बात बोली। अब लोग बोलेंगे फाइनल से पहले बोलना नहीं चाहिए, तो ठीक है, अब वो तो उंगली उठाएंगे लोग। अगर वो चुप रहता और हार जाते तो कोई उंगली नहीं उठाता, बट उसने दिल की बात बोल दी कि हाँ भाई मेरे को रिवेंज लेना है। ऑफ कोर्स लेना है भाई, प्लेयर जो ना बोले वो भी बोलेंगे हाँ भाई ऑफ कोर्स लेना होता है, सबको लेना होता आफ्टर ऑल इट्स लिवरपूल, दे टॉक अ लॉट बिफोर द मैच। रॉबर्टसन है। सेइंग, या रॉबर्टसन सेइंग इट टू एटलेटिको मैड्रिड। या मतलब this is not something happening for the first time, but let's carry on. Is Dybala good fit for Real Madrid? Not at all भाई, इंजरी प्रोन है। और भाई जिसके बारे में बात करें, नितिन भाई ने सही बात करी भाई, एक नए प्लेयर पे इन्वेस्ट करो मोर देन ऑन डिबाला। यू हैव टू विन द फाइनल इफ यू स्पीक टू विन इट। मतलब ये तो भाई अब भगवान के हाथ में होता है AVS, तुम्हारे। AVS. See, seriously, just be careful what you say. Otherwise, Sonu next year will want to take revenge on you. Okay, so just एंड आई एम please, नॉट मोसाला। yeah. भाई लेकिन टॉकिंग अबाउट बार्सिलोना मूव्स भाई, मतलब एज अ रियल मैड्रिड फैन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो कुंदे साइन करते हैं विद क्रिस्टियनसन, एरिक गार्सिया एंड एरोहो with our backline, I will not be very afraid of matlab what Barcelona is bringing right now, because Eric Garcia Christensen, to be very honest, doesn't sound a very good and astonishing center back signing. And you will also see them selling these players after one or two season. मतलब मेरे को ऐसा लगता है एरिक गार्सिया is a good ball playing center back, and ball playing center back की बात होती है, but at the end डिफेंडर का पहला काम होता है डिफेंड करना। एंड अगर आप वही ठीक नहीं करते हो तो यू आर नॉट राइट फिट फॉर द पोजीशन। प्लीज गिव देम अ चांस इन द सेंटर मिडफील्ड, दिस इज व्हाट आई फील। और मेरे को नहीं लगता कि भाई एरिक गार्सिया इज अ बार्सिलोना वाला प्लेयर भाई। एंड टॉकिंग अबाउट जूल्स कुंदे येट अगेन, वो डिफेंडर वाली बातचीत नहीं है भाई उसमें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज नॉट, यू विल नॉट से ही इज गोइंग टू बी द टॉप डिफेंडर इन द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 5 सीजन। मेरे को ऐसा नहीं लगता है। आई हैव सीन हिम प्ले इन सिविया, फॉर दैट मैटर फ्रांस में भी। अगर लोग उसे कहते हैं कि ही इज वर्सेटाइल, वो राइट बैक भी खेल सकता है भाई, नहीं खेल सकता, वो गधा बना देते हैं उनको भाई। You forgot Papa of Real Madrid, brother. You forgot the El Clasicos we played before this 4-0 वाला. That's why you were saying this. वरना मिंगेज़ और आरोहो को चिड़िया के घर भेज के विनीशियस आगे भाग गया था। आपको वो वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी। But it is what it is. You can think whatever you want to. But going on भाई, चेल्सी का क्या लग रहा है नितिन भाई? चेल्सी मतलब टॉप 3 नहीं हो पाएगा नेक्स्ट सीजन? ट्रांसफर क्वीन चली गई ना उसमें जो।
they are going to. Oh my God, she really looks like a queen. Anyway, never mind. This Raheem, they're going to get Raheem Shillings for 50 million Shilling. shillings. Oh, Same you price don't City know paid. that? Say, yeah, you know. Look at your benefit it. मतलब Your मतलब sell your मतलब fullback रहीम for 50 million and buy रहीम one for five. स्टर्लिंग भाई मतलब कैसे एक प्लेयर डायरेक्ट लिवरपूल से सिटी चला जाता है फिर डायरेक्ट सिटी से चेल्सी चला जाता है ठीक है टॉप सिक्स इसने गार्डन बना रखा है हर I जगह That's जा don't रहा है भाई मतलब understand, dude. that's royalty. People like people. No, the thing is, people. I've heard this many a time actually, but people have this thing about wanting to play in London. So it's very apparently it's a very attractive idea to a lot of football players. So But also he doesn't want to play in Man City. No, who else is going to buy him? If you think about it. So बारसा चले जाए अच्छा विंगर बारसा को मिल जाएगा एटलीस्ट एन अपग्रेड ऑन अडामा no, 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 no. Baby oil pro area is good. Dude. Don't do this. Don't भाई do this to people, please. Kunde is better than Militao in my books. पांडे भाई Yeah, yeah. Kunde has a nicer haircut. बट भाई It's मे बी अ बेटर फेस definitely a लेकिन better. बट देन दैट इज सब्जेक्टिव but Sure. let's talk about the serious defenders that Chelsea can buy this season. Koulibaly, Pau Torres. डिलीट डिलीट But do you Could see be. क्योंकि मतलब डेलिट रेडी है जाने को उसको इस सीजन ऑफर आएगा वो चला जाएगा Dude, आई एम I हंड्रेड can't परसेंट श्योर wait for. I hope Delete comes, dude, and I hope we just smash Chelsea because of what he also did. What he also did to us, no, like this De Jong fellow, no. I just hope we trash Chelsea, dude. हाँ भाई Sick, यूनाइटेड के काफी स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे डेलिट से जब चल रहा था dirty business he did with us. बट Like, यार I'm just looking forward to it. डेडेविल भाई मैं भी यही कह रहा हूँ कि जूलियस गुंदे सही है बट वो प्लेयर नहीं है जो आके फॉर्च्यून चेंज कर देगा डिफेंस लाइन में आई डोंट सी आरोहो कुंदो क्या क्या कहते हैं कन्वर्टिंग इनटू द बेस्ट पेयरिंग द सोल्यूशन फॉर बार्सिलोना इन द अपकमिंग ईयर्स मेरे को लगता है पाउ टॉरस विल बी अ बेटर फिट क्योंकि जो मतलब बेसिकली स्पेन की साइड ही बनाना चाहते हैं तो आप पाउ टॉरस पे जाएं और पाउ टॉरस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस्ड मैं कहूँगा एंड अगर आप देखो पाउ टॉरस प्लेस फॉर विलारियल और विलारियल की जो सेंटर बैक पेयरिंग है अल्बियोल एंड पाउ टॉरस की वन ऑफ द बेस्ट पेयरिंग एंड सबसे कम गोल्स खाने वाली वो जोड़ी है वो इस सीज़न ला लीगा में तो आई वुड से पाउ टॉरस वुड बी अ बेटर प्लेयर देन कुंदे ये मेरा ऑप्शन है मतलब कुंदे इज अ गुड प्लेयर आई एम नॉट सेइंग ही इज एज क्रैप एज एरिक गार्सिया आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दैट ही इज अ गुड प्लेयर फॉर श्योर बट इलीट वाली जो बात आती है ना जो आप देखते हो प्लेयर्स में जैसे आप आरोहो में जो चीज़ देखते हो वो मैं नहीं देखता कुंदे में भाई और मतलब अगर एज अ क्लब और अगर लीग में जैसे आपको थोड़ा अच्छा फिनिश करना है जैसे फारसा का है मेन गोल हमेशा से रहता है देन ऑफ कोर्स यू वुड प्रेफर टू टेक एन इम्पोर्टेंट प्लेयर फ्रॉम द पोटेंशियल अदर टॉप फोर ताकि उनका भी बैलेंस हो जाएगा अगर आप पाउ टॉरेस को निकाल लो उनकी टीम से तो उनकी डिफेंस लाइन को ज्यादा झटका पड़ेगा पर Yeah, we were कुंदे भी तो वही interested in खेलता है Pau ना Torres. We were interested in Pau Torres and Julian Timber. Those were our two links. Now, as much as I don't really want a Villarreal player in my team, if you know, you know. If you understand this reference, you'll understand it. But I mean, it makes sense, right? Like, also, isn't Jules Kounde really short? Like, don't you need like a somewhat average sized center back? Isn't that just better? Like for corners and all, I mean, of course, he's doing well in Sevilla, and Chelsea also want him, so maybe they don't care. But it's बट also like, चेल्सी के सिस्टम में कुंडे सूट्स बेटर बिकॉज दे गो विद अ बैक थ्री तो oh, look. Already the Real Madrid bias has started. La Liga fixtures are out. Madrid plays Almeria. What's Tough first week. Tough what भाई first week. you have As to usual. play Tough first week. you have to play Tough first. by action Dude, we got Brighton. Our first fixture is Brighton. Our हमें last हमें तो fixture is Brighton. They're getting jammed. 4 साल से प्रमोटेड टीम मिल रही है भाई मतलब फुलहैम भाई फुलहैम ने हराया था हमको लास्ट सीजन नहीं 1-1 ड्रॉ था शायद नहीं भाई भाई फुलहैम नहीं खेलना मुझे मुझे डर लगता है फुलहैम से मिट्रोविच भाई द लेजेंड द ओजी भाई बार्सिलोना फेसेस राया वैलेकानो और मैं तो ये कहूंगा कि कंट्रोवर्शियल Tough क्वेश्चन match. Tough match. Another tough match. भाई यार Another tough भाई match.
Nathan, bro, we also we had to play some easier team in the first week because we are playing Super Cup for Jayant Kumar's Bro, we birthday. got We are Brighton. playing We Super got Cup Bryant. on We versus got Frankfurt on my Brighton, dude. birthday, bhai. दोस्तों birthday stream on 10th of August. Frankfurt versus Real Madrid Super Cup. It's Yeah, coming, Frankfurt guys. need to beat Barcelona and Real Madrid. Come on, let's go. That would be great. Eintracht Frankfurt is the best team in Europe. The best team in बट Europe. बट Oh, तुमने अगस्त अक्टूबर फिक्चर्स देखे यूनाइटेड के? नहीं देखे. ओ बढ़िया. भाई साहब, oh, सिटी, they are gonna get चेल्सी, rocked. आर्सेनल, लिवरपूल, टॉटनहम सब खेलने हैं उनको भाई क्या एक ही कहते महीने हैं, में. वो क्या कह रहा था मैं कि वैसे रियल मैड्रिड हैव नेवर डिसअपॉइंटेड मी. दे हैव ऑलवेज गिवन मी माय बर्थडे गिफ्ट क्योंकि सुपर कप उसी के अराउंड होता है. एंड फॉर्चुनेटली क्या कहते हैं, हम लोग जब भी थे 3 चैंपियंस लीग जीते लगातार. तो उसमें एक एथलेटिको से हार गए थे. बट आदित्य पांडे का क्वेश्चन है भाई, सोनू भाई तेरा ही व्यूज चाहिए मेरे को इस पे. बिकॉज कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, क्या रेमोस का यूएफसी मूव इंटेंशनल था इन द फाइनल? ऑफ कोर्स इट वाज इंटेंशनल, ऑफ कोर्स, नो डाउट्स. I actually didn't see this move, dude. But you know, हाँ, नेथन कैन टॉक अबाउट यूएफसी वेरी वेल. बट मेरे ख्याल में तो नहीं था भाई. it is. भाई कंधा उतर गया था. ठीक है, इस बार तो हमने पूरा सही सलामत रहने देना भाई को. सेम रिजल्ट. तो आई डोंट थिंक दैट वुड हैव इफेक्टेड एनीथिंग. बट रैमोस विल टैकल क्लॉप एंड लिवरपूल स्टार्टिंग 11 मे बी. Yes, by 100%. To United fans, you need two important things this season: hope and a BP machine. Oh God, don't do that, yeah, ABS. Don't do that, please. Please don't do that, brother. But yeah, I have enough health issues already, dude. Please. it was not a UFC move; it was a Sultan move. दोस्तों please like the stream यार. क्या है, what is this? Do like the stream. और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि सोनू भाई एज ए लिवरपूल फैन तो कैसा लगता है कि तुम लोगों ने 30 साल तक एक लीग नहीं जीती, फिर तुमने लीग जीती है, नाउ यू आर फॉर श्योर बेटर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो कैसा लगता है इस टाइम? How? We are still one more leagues than all of them in the Right last now, 30 yaar. years. How Right. are they better than us? You have to win more things and you have to keep winning just like Real Madrid. But मैं सोनू से पूछना चाहूँगा कि तेरे को कैसा लगता है सोनू भाई? कैसा लगता मतलब है? अच्छा यार, अभी 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 हमारा टाइम चल रहा है. अभी मैसेज फॉर 10 साल यूनाइटेड पहले, फैंस. 10 साल पहले देखो, मैसेज कुछ नहीं है. देखो, हर टीम का टाइम आता है, हमेशा अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है. वो मैड्रिड जैसी सक्सेसफुल टीम का भी टाइम नहीं था, उनको भी 30 साल लगे. शायद चैंपियंस लीग का कुछ था, एग्जैक्ट नहीं पता. 10-12 साल. Yeah. तो यार, सबका अप्स एंड डाउन सबकी टीम में आते हैं. आपकी टीम का अप चल रहा है तो खुश रहिए, कॉकी मत होइए. हाँ, कभी कभी हो सकते हैं, बट खुश रहिए, क्योंकि भाई दूसरी टीम को भी मौका मिलेगा. 10 साल तो 20 भाई साल भाई हमने भी देखा जब यूनाइटेड पूरा जीतती रहती थी. द ओनली कप वी हैड वाज द 2012-13 में भी एफए कप, सॉरी कैराबाओ कप जीते थे हम, जो जॉर्डन Yeah, dude. हेंडरसन Everyone's favorite Yeah. Disney character was Mickey Mouse, dude. It's fine. No So, issue, dude. It's okay. so it was good and painful at the same time, but ठीक है, happy now. भाई but I don't know how You are people not look that at it, calm, right? bhai. Because you know what? I don't know how people look at it, right? But people have a very present memory about football. For me, every time I watched Manchester United play Liverpool, I always was nervous. It does not really matter to me which position they were. It did not matter if we ended up winning a double that year. For me, it was always, if we watch play Liverpool, we are worried. If we play Arsenal, Man City. lol भाई मैन से नीतीश मीना ब्रो वेलकम. But आप आए नहीं और मैन सिटी पे but traditionally, like we used to be. I don't know, dude. We used to always worry about them. It didn't matter. But it It was- didn't matter about form. It but didn't matter Nathan- about anything. it was not like in every match you are like bit nervous, but because past the last No, season it dude. was. I see. For me, no. I was. In fact, the last season I wasn't, because I knew we were going to be in trouble. But prior to that, like let's say 3 years back from the time I started watching football, it was always the most important game to me. Them and Arsenal, always. It didn't matter who we were playing in Europe. It didn't matter whatever titles we would win at the end of the season. For me, as a singular fixture, it was always Liverpool, Arsenal, Liverpool, Arsenal. And you know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpool, Arsenal. And I don't know, people nowadays go, oh, they are far better than us. They are far better than us. But for me, it was always Liverpo
like apart from European leagues, you are don't like there is no actual certainty of dominance per se, And of course, the European cups count. I'm not saying they don't count, but it's like that is how important the Manchester United Liverpool rivalry is. It didn't matter if we were relegated. It didn't matter if they were relegated. It was just an important fixture, eighth place, ninth place, whatever the places were, and that's how it is. Yeah, I don't know. भाई And yes, Raktiv, this fellow is not here today. Chai Batis is not here today, but if you were there हाँ present जी for that stream, I said GSW in 6 games and they won in 6 games, baby. हाँ भाई Sorry, 5 rings, baby. One for each finger, not like Marcelo style, 20 actual साल rings. लगे थे, वही मैं कह रहा हूँ, 30 साल नहीं Just, लगे just. थे, 20 ईयर्स लगे थे शायद, हाँ मतलब ये 20 साल Yeah, यूनाइटेड ने yeah, it खुद was का. 20 something years. नेथन, सिंस व्हेन आर यू फॉलोइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड? अर्ली 2000 आई गेस. I would say I really got into it in 2006, but I remember very, very clearly Beckham leaving us. So around the time Beckham was still a player for us, probably 2003, 2002. So I've seen Keane play, I've seen Beckham play, seen, of course, I've seen Scholes and Giggs play, I've seen Nicky Butt play, I've seen Quentin Fortune play, I've seen Van Nistelrooy played when he was Let's in his prime before he went to Madrid. भाई, A while, a while. because It's been a because while. because we are talking about transfers, let's make this thing a little interesting. सोनू और नेथन भाई के बीच में एक थोड़ा सा प्यारा सा चैलेंज है. हाउ मैनी 100 million प्लस साइनिंग्स कैन यू नेम इन 30 seconds? नेथन भाई, हाउ मैनी कैन you cannot Hundred, think wait, about it. 100 million pounds 100 or million euro? included and above that. No, Pounds, no, pounds or euros, 100 pounds, euros. भाई यार कैलकुलेट, इंक्लूडिंग एड ऑन एड एड-ऑन्स, ऑन इंक्लूड करें. सब कुछ करके 100 मिलियन, ठीक है. हाउ मेनी कैन यू, और दोस्तों प्लीज डोंट राइट अभी हाउ इज बायर्न स्क्वाड लुकिंग, डिविश भाई अभी उसके बारे में बात करेंगे. नेथन, व्हाट इज योर एज? 45 प्लस. भाई यू आर गाइस, फकिंग गाइस, यू आर थिंकिंग अबाउट हाउ मेनी. नहीं गाइस मैं पांच बता दूंगा, पांच. चार पांच नेथन, बता दूंगा. कैन यू मेक? I was going to say maybe four, तो मतलब सोनू भाई maybe four. कुछ और भाई, थोड़ा तो बड़ा मैच, 5 तो चलो. अरे 30 गिन लेते हैं ना यार. 30 नेमार है, ग्रीलिश है, डार्विन नूनेज है, 3 हो गए. उस्मान डेम्बेले है, 4 हो गए. रोमेलो लुकाकू है, 5 हो गए. हजार्ड है, 6 हो गए. कम ऑन यार, नॉट वही तो 5 तो इट्स नॉट गुड यार. 5 तो एनीबॉडी कैन नेम. इवन गैरेथ बेल वाज 100 मिलियन. पॉगबा यार, है? तो बेंच तुम्हारे उसमें सारे हैं यार. अरे ये प्लेयर ही मेमोरेबल नहीं है भाई, तो फिर क्या ही भैया, प्राइस क्या है. सोच कितनी अच्छी चीज करी, बट तुम लोग नहीं. कोटिनो इज देयर भाई. बार्सिलोना का नाम लेके तुम 2-4 तो तुम. Coutinho. कोटिनो, ये देखो रिपीट कर रहा है कोटिनो भाई. No, I thought. Did you wait 1 minute? Sonu didn't say Coutinho from his own team. I thought he said Coutinho. he did not. नहीं कुटिनो नहीं बोला मैंने. Witzel I think to Griezmann and Felix even, right? Were 100 plus. भाई, अकॉर्डिंग टू यू गाइस, फीलिक्स 100 था. भाई डिविश भाई का ले लेते हैं, फिर लक्ष्य भाई का भी ले लेंगे. लक्ष्य भाई का पहले ले लेते हैं ऐसे. विटसेल टू एटलेटिको, डन. थॉट्स? 1 साल का See, है now भाई. that is an upgrade move for Wilson. हाँ, now that's upgrade from Dortmund to. It is, dude. It is. I don't like Atletico Madrid, but it is an upgrade move. बट 1 साल का ही यार. I mean, whatever. Yeah, it's a good move. Good for them. Is there any player sold over 100 million twice? Yeah. Trampoline toes, right? Trampoline toes. He absolutely sucks, dude. And I have proven right. Ole Gunnar Solskjaer has proven right. God bless the baby-faced assassin. If he doesn't know strikers, no, all of y'all can go do one. True that. You believe them, dude. Nobody believed them. Should United sign Neymar on loan from PSG? यार पहले वैसे बायर्न की बात है. मैंग Yeah, they should sell your stadium rights. Sell your stadium rights. Like the streams, Take him boys. on his wage. Like the stream boys. जितने में तुम नेमार को लोन पे लाओगे उतने में 2 प्लेयर साइन कर लेगी लिवरपूल भाई ऑन परमानेंट 6 ईयर डील. बट सोनू भाई, तेरे को लगता है जो बायर्न ने स्क्वाड अभी बना लिया, गेवनबर्च, माजुरोई, देन दे हैव साइंड माने, और नाउ द अदर ऑप्शन इज लेमार के लिए वो जा रहे हैं फ्रॉम लाइप्जिग.
तो क्या लगता है तेरे को, आर दे द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन? बिकॉज बुंडेसलीगा में तो, और हाँ क्या तेरे को लगता है यार, जो डॉर्टमंड ने साइनिंग करी है, देयर विल बी अ टफ कंपटीशन इन बुंडेसलीगा दिस सीजन? देखो बुंडेसलीगा में कंपटीशन टफ मतलब क्या, 1-2 पॉइंट का गैप तो नहीं होने वाला है भाई भाई, मिनिमम 8 पॉइंट तो हो गए, और No, 8 पॉइंट को मैं टफ तो नहीं बोलता। it will be a tough league from 2 to 20. 2 to 20, That way. okay, That okay. way downwards it will be tough. That way downwards. और बायर्न म्यूनिख इन चैंपियंस लीग भाई हमेशा आप 33% तो उनको देते ही देते हो, मतलब ऑफ कोर्स। They'll get a good बट group. No, but they'll बट get मेरे some को मेरे people को from मेरे को Kazakhstan. मिडफील्ड का इशू है, बायर्न की मिडफील्ड में कौन है? गेवन बर्च आ गया, गोरेट्स्का इज देयर एंड मसूद मूसेवाला, मतलब सॉरी सिद्धू मूसेवाला, मूसेवाला मूसेवाला रेस्ट इन फॉरएवर, पीस। रेस्ट इन पीस यार। मैं ये कह रहा हूँ मूसेवाला है तो दैट्स अ गुड फिट। मुलर इज आल्सो देयर, अभी तो है लड़के, किमिच इज देयर, मिडफील्ड इज गुड भाई। पता नहीं मेरे को मिडफील्ड में थोड़ी How many अटैक more बढ़िया years है। does Muller have? Dude? दे स्टिल हैव मुलर मुलर भाई हु इज यंगर देन मेनी How प्लेयर्स। many? क्या ही खेलेगा वो, कितने साल का है मुलर, कितना हो गया उसका? नेक्स्ट यूसीएल इंग्लिश पंडित्स विल Lakshar is saying we paid 100 million for for Lukaku 1 year alone. फॉर लुका, यस ब्रो, हाँ, the most expensive loan in history. मोस्ट एक्सपेंसिव I'm लोन। so happy. Dude, when we sold him, I was Divish so bhai, how happy. far though. can Senegal go in World Cup? Suraj bhai can only answer that. We are Yeah. I don't know. I can answer it for you. Yeah. Very far in They the can- African league. In the African No, Cup, no, no. obviously. They Very far. can go as far as the location, that is Qatar. Oh That's my it. God. I will put again City, Liverpool, Real Madrid ahead of every team to win champ. तो बायर्न के लिए चैंपियंस लीग में आप कहाँ रखते हो फेवरेट्स में? फर्स्ट, टॉप 3, टॉप 4 Top 4, और फोर्थ टीम बीइंग बायर्न। 4th being Bayern. लॉल। तो भाई ये हो गया आपका उस चीज़ का आंसर। भाई नेमार पे आते हैं यार, नेमार ने अपना हाल कैसा कर लिया भाई। नेमार ये भाई ट्रांसफर लिस्ट में एक बंदे को 2022, थियागो भाई लेता हूँ एक बार ही प्लीज़, एक बार नेमार के बारे में दोस्तों, योर व्यूज़ ऑन नेमार। सोनू भाई ये बात तो क्लियर है कि जो उसकी अभी करंट सिचुएशन है, नो बडी एल्स टू ब्लेम फॉर द सिचुएशन, नेमार इज द ओनली guy you can. How is it different from Mbappe's current situation, dude? He got thrown a hotel and he wanted to stay in Paris. It's like, how is it different? But Neymar The current same situation is on the transfer list and they want to get rid of Neymar. Yeah, And because of Mbappe, they gave Mbappe the Neymar deal, and now they can't deal with it because the FIFA is going to come for them eventually. So they have to get rid of somebody. अब दोनों प्लेयर को उतनी डील नहीं दे सकते ना, मतलब you cannot have two Mbappes in your team, at least the deal part. तो और also अब नेमार कितना 31 नेमार है, how old is he? He's already 31. भाई इतना ही है वैसे। भार्गव भाई ही स्टेड एट पीएसजी, बट कब जीत सकता था वो, कब जीत सकता था बैलेंडोर जीत सकता था अगर वो क्या कहते हैं वहां रहता। यार अगर आप टॉप 5 लीग में नहीं हो तो बैलन डोर जीतना इज बहुत मुश्किल, अनलेस एंड अनटिल आप 100 गोल मार दो पूरे सीजन। भाई मेरे ख्याल से अगर वो बार्सिलोना रहता तो मेरे ख्याल से वो नेमार जीत जाता, बारसा रहता तो वो बैलन डोर जीत सकता था मेरे ख्याल से। पीएसजी में तो यार एक तो इस बंदे ने पूरा ट्रांसफर मार्केट ही बेकार कर दिया पहले तो। 222 मिलियन, कोई लॉजिक ही नहीं बनता है प्लेयर का देने का। और अभी कोई पूछ नहीं रहा, अभी कोई नहीं पूछ रहा भाई, अभी लिटरली कोई नहीं पूछ रहा। चेल्सी जाएगा, क्या कहते हैं, या बार्सिलोना जाएगा मेरे ख्याल से। द राइट नाउ विच टीम डू यू थिंक सूट्स नेमार स्टाइल द मोस्ट? द नेमार स्टाइल मीनिंग हिम प्लेइंग स्टाइल से फर्क नहीं पड़ता ना, अनलेस एंड अनटिल ही वांट्स टू गो डाउन ऑन द वेजेस। मेरे ख्याल से बार्सा, हाँ वही है, बारसा तो अफोर्ड कर नहीं सकती, मेरे को नहीं लगता कर सकती है बारसा। लेकिन अगर कुछ भी करके अगर कोई डील होती है तो मेरे ख्याल से उसको बार्सिलोना ने जाना। मैड्रिड कर सकती है। नहीं, मैं I don't want a player out of the squad. Neymar to Real Madrid भाई। I think Neymar should go and play with Ronaldo at Manchester United. ठीक है। लेफ्ट विंग भाई सोचो भाई, लेफ्ट विंग नेमार, राइट विंग सैंचो, सेंटर फॉरवर्ड रोनाल्डो, भाई साहब। सोच भाई। Yeah, and sitting on the stands, Alex Ferguson and Glazer family. Thank you. I know the positions of it. I mean, definitely it would be an upgrade on Anthony Martial. Dude, Neymar wanted bitches, that's why he you know, went to PSG. I'm only interested in Neymar, right? If we can do a swap deal with Rashford. Otherwise, I'm not in.
Bro, Rashford is working so hard. I saw the videos of him climbing up rooftops, bro. Yeah, yeah. He's jumping from True, Old true. Trafford to Merseyside in one leap, bro. But 5 years ago, Mourinho sir said Luke Shaw never uses his brain. Pogba is a virus. He's not a team player. Marshall is lazy, and he said things about other players as well. And guess what? Proving to be, It was true. it was everything It was was true. true. The Mr. Astrologer Jose Mourinho. Hello, भाई No, क्या but हाल है dude, खान भाई क्या what's up? but you know, you say that, right? But after Mourinho left, everyone is going, Pogba's going to do. And I remember having the conversation on your stream only. If someone can be next to made a joke, yeah, dude. If someone can be next to Pogba, behind him, in front of him, on the left wing, I'm like, dude, we buy a player at a time. We don't buy a player for another player. Okay? Devish When by you all saying bought Ronaldo, no, you all bought Ronaldo to play on the right wing. When Raul retired, put him as a forward. You didn't buy Ronaldo, no. When Raul gets old, no, to send him on the bench. This is what the one thing I don't like, and that is why, no, I am so happy he's going to Juventus, where there is no Chiellini, there is no Dybala, and now we will get to see what he can do. And when he doesn't do well, and when Solskjaer played him on the left wing and everyone got pissed off, you all will see. You all will see now. He's going to a slower league. He's going to a league where he has won Scudettos. Let's see what he can do. Very interesting it's going to be. But it's nice to see in La Liga that match day 9 is the El Clasico on 17th Wow, October. 9. It's Real Madrid versus Liverpool versus Barcelona. United is match day 4. I guess it's 4. It's the fourth or the fifth match of the season. Fourth or fifth match, United versus Ah, Liverpool. United versus Liverpool. Crazy बच्चा बच्चा it's a crazy day. उससे पहले एक प्री सीजन मैच है. हाँ वो रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना में प्री मैच इन यूएस. You guys The underestimate wish, Senegal the नहीं. wish, the wish. We do not underestimate Senegal. There is just 5-0. a there is there is just a quality gap. Yeah, we will see. We will see. Okay, let's just put it that way. We will see. गाइस अर्ली प्रेडिक्शंस कर लेते हैं दोस्तों. लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड फिफ्थ और फोर्थ गेम वीक 5-0 थियागो इज सेइंग. नितिन भाई योर अबे Two यार one, तुम two लोग. one, 2-1 Liverpool. 2-1. My god. And that one from Ronaldo. There is. I'm telling you, there's going to be a difference. Mark my word. Even if we have the same crap, which I think it looks like we're going to have the same Same crap. crap. But It, it's it is what it is, dude. दोस्तों There is not one United fan, no, that can look at me in the eye, no, and tell me, no, that they were not crap last season. But There दोस्तों is not one. जो भी हो आई एम तो वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सीजन बिकॉज इस बार हमारे साथ इतने सारे लोग हैं. जब पिछली बार हम यूरो की स्ट्रीम करते थे लिटरली 2 और 3 वॉचिंग होती थी. इस टाइम आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि इस टाइम लड़ाई वड़ाई होगी और इस बार आई वांट मैनचेस्टर यूनाइटेड टू विन सो दैट नेथन कैन ब्रिंग हिज रियल सेल्फ द कॉकी नेथन बिकॉज आई नो इज वेरी कॉकी और आई वांट रियल Uh, मैड्रिड एंड Lakshay said something really interesting. Godse Dude, back to Germany. Mario Götze's career is so interesting. He went like outside of Europe. He came to Turkey or something. It's like so crazy. He's gone to Frankfurt now. It's the most ridiculous clubs he has played for, and I think he's only 31. And I remember in 2018 he was there to join Liverpool. There were rumors. I mean, not rumors, proper connections. There were like, yeah. It was like y'all wanting to get the next Italian star, no, Alberto Artilani. But God, before that was before terrible. before United Liverpool, we have a trailer of Darwin Nunez versus Erling Braut Haaland बट दोस्तों in the Community Shield. द रॉक भाई क्या Oh, हो रहा है. community. द रॉक भाई क्या हाल है. अर्ली प्रेडिक्शंस फॉर रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना गाइस. फर्स्ट इज हु इज गोइंग टू विन द एल क्लासिको दिस टाइम अराउंड गाइस. दिस क्वेश्चन इज फॉर यू ऑल्सो. क्या लगता है रियल 2 जीतेगी बार्सिलोना 2 जीतेगी एक एक डिस्ट्रीब्यूट होगा. द पोल इज ऑन एंड प्लीज आप इसका आंसर कर दें. तुम लोग बताओ दोस्तों. सोनू भाई 5-3. क्या फर्स्ट एल क्लासिको स्कोर लाइन. 5-3. हाँ 3-1 Real Madrid. ah my goodness this 3-1 score line. Love with this. भाई मेरे हाँ, ख्याल से तो 3-1. एक ड्रॉ एक रियल मैड्रिड जीत रही है. ड्रॉ कौन सा बर्नबाओ? नहीं नहीं कैंप नो.
बर्नबाओ में जीतना है Hey, भाई, speaking लिटरली। speaking of transfers, Arsenal the blockbuster deal from Marquinhos from Sao Paulo. ये बट हमने उसकी बात भी नहीं करी ना, वियरा, हाँ वियरा भाई, टू यस, आर्सेनल। वियरा टू आर्सेनल यार। आर्सेनल पे आता है, लाकाजेट से बात चल रही है, एंड देन वियरा टू आर्सेनल। योर व्यूज गुड गाइस। साइनिंग भाई, लास्ट सीजन And पोर्चुगीज मतलब प्ले मेकर ऑफ द सीजन था शायद वियरा, मोस्ट असिस्ट्स। हम्म। भाई तो वन अगर ईच। एक अच्छा अच्छा स्ट्राइकर अगर आर्सेनल ले लेती है, मतलब दे तो दिया उन्होंने 14 नंबर इनकी टिया को, बट आई डोंट नो, बट हाँ भाई लिंकअप बढ़िया होगा बिटवीन साका, long deal, ऑडेगार्ड भी right? है ना, साका, मार्टिनेली, एक सेंटर फॉरवर्ड प्रूवन ना एक बनता है। आई थिंक दे शुड गो फॉर टीम ओवर, आर्सेनल गो फॉर टीम ओवर। मेरे ख्याल से तो भाई, मेरे ख्याल से तो आर्सेनल विल डू टू गुड इफ दे साइन, क्या कहते हैं, ये गैब्रियल हीजूस। Gabriel Jesus. गैब्रियल हीजूस, दैट विल बी वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग दिस ईयर फॉर श्योर। I don't think so, but who's going to feed him, dude? That's the thing. नहीं So now और they bought Vieira, right? And Sonu said he's Portuguese playmaker of the year. हम्म। Now the problem with that is they have Smith Rowe, they have Odegaard, they're all playmakers. How do साका, you fit everyone in the midfield? नहीं, आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट ओडिगार्ड एंड लाइक वियरा फॉर श्योर, मेरे ख्याल से, मेरे को लगता But if है you विद start if you पार्टे। start playmakers and Partey who tends to be injury prone, Arsenal are going to have what we have, a hole in the middle, only attacking players in the middle. नहीं, No, but दैट्स but but I don't think there would be any problem because I don't think Xhaka would be getting the game time. Personally, I think he won't be there in the starting But 11. Xhaka might have to get the game time if Partey gets injured, right? Partey gets injured Ha, anyway. Like if Partey gets injured, then there is, you know, that's a different matter altogether. But if you go with a 4-2-3-1, with the backline you go, then the two you have Partey along with Vieira, one more. I yeah. mean, most probably it would be Uh, Vieira only. so, And then you have Odegaard, Saka, and Martinelli, and the centre forward Gabriel Jesus. So pretty good team. भाई, क्या कहते हैं, but they don't have any height though. They will be very weak from Ah, corners this year. that They'll is be an very issue. weak But from then corners. you maybe know, the typical Arsenal goal is not about height. It's about that slip Yeah, but passing. maybe their Gabriel defenders got a will, lot. हाँ, Gabriel got a lot of goals for them वही this तो कह रहा season. हूँ, गेब्रियल विल बी देयर, होल्डिंग विल बी देयर, मे बी बेन वाइट। With a Turkish haircut. बट वॉट एवर इट इज दोस्तों, बिफोर एंडिंग दिस स्ट्रीम, एंड दोस्तों अगर आपने नहीं लाइक करा तो लाइक कर दो। नाउ आई गॉट टू नो कि मेरा थंबनेल इज नॉट राइट, बट मैं ये पूछना चाहूँगा, अकॉर्डिंग टू यू गाइज, हु आर द ट्रांसफर विंडो विनर्स अप टिल नाउ? ट्रांसफर विंडो विनर्स अप टिल नाउ दोस्तों, इज इट is it Real Madrid because they have signed Chouameni and Rudiger, two top signings? Is it Manchester City because they have signed Haaland and Alvarez? Is it the fact that Liverpool have signed Ramsey, 12 साल का था, उसकी ट्रिकरी देख लेना एक बारी, And and Fabio Carvalho. Carvalho and Nunez? Is it Bayern Munich, obviously, Mazarui, Gavenberch, Mane, Lemar on the list, then Dortmund with Haller, Adiami, Schlotterberg, and this player Sule. Good signings. And the इन सब में से कोई नहीं है। Tottenham. टॉटनहम है भाई विनर, But Tottenham, क्योंकि no, but they got two free agents, right? What? Fraser Foster, who's the backup Southampton goalkeeper. Who else they got? Who was the other free agent they got? Bissouma, they got Bissouma. Busuma for 20 And million, and Perisic. the third, Perisic. free on the free Perisic. So देखो, अगर अगर तुम टॉटनहम मेरे लिए इसलिए क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के हिसाब से United. उन्होंने मतलब उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स के ऊपर की साइनिंग कर लिया। नो वन एक्सपेक्टेड टॉटनहम टू गेट बिसूमा, नो वन। might get the Richarlison as well. हाँ, Might देन get दे the माइट गेट, Richarlison. ओके रिचार्लिसन इज एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ, बट बिसूमा वाज लाइक कि हाँ यार ये तो सिटी बिड कर रही है, बिसूमा कभी लिवरपूल से कॉन्टैक्ट्स आ रहे थे, तो उस We हिसाब were से मेरे को लगता है interested कि in him. We were interested in him until he got that legal matter. Even we were interested in him. yeah, so he was like the big three उसके पीछे थी, and then suddenly Tottenham gets it at that price point, तो मेरे को तो लगता है टॉटनहम विनर्स है। बट देन फिर वो भी है ना कि आप अगर पोजीशन वाइज देखो तो हाँ आप कह सकते हो सिटी भी जो एक पोजीशन उनको सॉर्ट करना था उन्होंने वहां का प्लेयर ले लिया, डन। लिवरपूल आल्सो दे नीडेड अ बैकअप फॉर अ राइट बैक, दे गॉट इट।
They needed a midfielder, they got it. They needed a center forward, they got it. तो हाँ टेक्निकली हमारी But भी hold on. साइनिंग्स है वो. Who's your backup? Who's your backup right back? कैल्विन रामजी. Ramsey. Oh, he's a right back. Yes. In the interview he says I can play right back, right wing and center mid. I'm Yep. like mm-hmm. And भाई दोस्तों अगर And आपको I'll happily tell him, wow, it's nice to play in the Scottish League too. Thank you. not haha it's No, but yes. but good talent, good talent. 18-year-old, nice talent. Can I ask you one question before we go and answer Jan's final question? I just remembered Fabio Carvalho. Will we be expecting a formation change with a 10 Exactly, because you four have two an three out one. and out number 9? Yeah. Because if I remember correctly, Carvalho is a cam. So But वो so किसी what do क्या you think? What do you think is the what do you think the midfield is going to look बट like? मेरे को लगता है इस सीजन में कुछ ज्यादा Uh, काम का नहीं रहेगा कैम का नहीं रहेगा मेरे ख्याल से इस नहीं सीजन मेरे को काफी सॉलिड हुआ है कि यार फॉर्मेशन चेंज होगी. बैक फोर यू आपको बैक फोर पता है कि जो बैक फोर है वही बैक फोर होती है. मैटिप एंड कोनाटे के बीच हाउ में होता है जो होता है बस. बाकी तो कुछ होता नहीं है. एंड फ्रंट थ्री इट्स डियाज नूनेज एंड यू ah ah we from motherfuckers now we have a front three to beat all the men, all the people in the English Premier League because no one can say no to double D's. Diaz, Darwin, and Salah. Double oh, D's all the oh my way. god All the D's way. double oh my Double god D's. Double D's. D's the Double D's. D's So we have a front three of double D's. did it How takes many goals they score? 34 or 36 or 38 if we are like, you never know. 36 yeah double D's, ideally. But yeah. पंद्रह So, but guys if you want to and love to listen to a rant listen this Nitin bhai your views on Pogba saying things about Manchester United rant time I'll tell you what. I'll be honest with you, right? take Let's a see what rant he can do because honestly, let's see what he can do because this system. First, it was incompetency. Fine. As a free agent, he has complete free reign to choose whichever team he wanted to. He chose Juventus. Let's see what happens. Let's see what happens because Mourinho said he was a virus. His performances have not been world. I don't care what anyone says. What he does for France, dude, it doesn't matter. Lukaku scored 30 goals in the league and then barely scores double digits in Premier League. It doesn't mean anything, dude. The I'm very sorry to tell you, the Serie A is not like it was in the early 2000s. I don't know why people get offended by it. It just works that way. In the 80s, everyone wanted to go to Italy. In the early 2000s, everyone wanted to go to Spain. In the 2010s to 2020s, everyone wants to go to England. We will see what he does in Italy, and when it comes to pass that he's not as good as everyone thinks, that's enough. Because to me, I have always said this. He doesn't do shit in the World Cup without Kante and Matuidi. I've said that. So we will get to see. Simple. will there be a time when players would want to go to France? Yeah. Not भाई anytime soon. द रॉक भाई ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है न्यूकासल इतनी शांत क्यों है शांत शांत नहीं है भाई. उन्होंने निक पोप साइन कर लिया. द बेस्ट गोलकीपर इन द गोलकीपर प्रीमियर लीग, एटलीस्ट फ्रॉम द रेलीगेटेड टीम्स. एंड बट आगे पीछे कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं सुनने को मिल रहा है ऐसा क्यों डू यू थिंक नहीं नहीं, डू यू मैच थिंक टारगेट उन्होंने विंटर में कर लिया था. एक सेंटर फॉरवर्ड वो लेकर आएंगे ही. do you think the real transfer window starts in mid July do you guys think that I'll be honest देखो with यार, you. Eric Ten Hag wanted everyone on pre-season, so for us, we are behind हम्म, schedule. I don't know. I don't know about other teams. Eric Ten Hag very specifically said, "I want everyone आई मीन देखो before pre-season." आपको अगर So मसाला वसाला we are चाहिए तो भाई वो तो definitely फिर behind सबसे schedule. लास्ट डे पे मिलता है. Nitish Meena bhai he will definitely agree to what you are saying Nathan what Pogba did in his career except winning World Cup because of Kante alongside with him I don't know you would agree That's what I or not said. Gundogan has Of always said course, that of course, dude. Of course, एंड सोनू भाई ने Gundogan भी has been a better player in the EPL. सोनू भाई ने भी ये बात कही कि पॉगबा इज ओनली एज बेटर एज द प्लेयर नेक्स्ट टू हिम Yeah, bro. I don't want to hear that anymore, man. I'm over that shit, dude. बट The इस next पूरे player next to him ट्रांसफर thing. विंडो में I'm over it. Yeah. यार वही मैं कह द रहा हूँ बेस्ट हाँ द बेस्ट बाई तो अभी भी जिम जा वो है, मतलब आप अलग अलग बोल सकते हो, लेकिन द बेस्ट सेल तकुमी मीनामिनो फॉर 17 million टू मोनाको ब्रो. क्या बात 17 million euros bro. बट We मीना bought him for 7.5 million. दस Okay.
10 मिलियन का। I mean, I'm loving it. 17.5 million Minamino व्हाट्सअप के लिए. लॉयल चेल्सी Who भाई, is your लॉन्ग who, टाइम नो who's सी। your who's your who लाइक is your इट। backup right winger if y'all don't have Minamino? But y'all already sold Shaqiri, so who do y'all have now? Harvey Elliott. Oh, come on, dude. लीवर। What is क्या कह रहे what हैं? in the middle for one whole क्या कर season रहे and हैं? now he's the right ए winger? and ए रुक and जा। and Diogo Jota. ए रुकना ए। मैं कह रहा हूँ बट यूनाइटेड हैव डाउनग्रेडेड मेनी प्लेयर्स करियर इन रीसेंट टाइम, पॉगबा, माटा, मैटिच। भाई मेरे ख्याल से माटा जब आया तो Mata? बहुत घूम के आया था यार, बहुत घूम फिर के आया था। Wait, hold on, भाई hold on, hold on, hold on, hold on. Wait, hold on. Mata, Mourinho didn't want him and sold him to us. First of all. Okay. Matic was bought when Mourinho came to us. And Matic is actually the only player who has performed solidly since he has come to our club. I don't know about downgrade because I have told Jayan many a times and we have seen many a times he cannot play 90 minutes. So I do not know how you can call it a downgrade when you physically can't do it yourself. But as far as Matic is, dude, Pogba, I'm just going to say we are going to see. Because I just want to close off with this. Your Bruno Fernandes has had the best 6 months, no, in the last 20 years of the Premier League. The best 6 months, he played with the same shit Pogba has played with, the same shit. No Ronaldo in the team. And he has performed better than any player we have signed in a long time. He ट्रू played in the दैट। exact same team. Guys, you tell me if I'm right or wrong. But Bruno Fernandes played in the exact same team Pogba did and has did more in one 6 month spell than Pogba has done in 6 years. डेनिश मतलब थियागो भाई ने कहा है कि यूनाइटेड विल फिनिश फिफ्थ और सिक्स प्लेस नेक्स्ट सीजन। डू एग्री टू दैट गाइस? अबे मेरे को समझ आ रहा है एटलीस्ट टीलमेंस ले लो यार, फिर अगर टीलमेंस भी तो फ्री है ना. मतलब Tielemans might go to Arsenal as well. boy, oh boy. Matic lost the fitness required to keep up for entire season, lost some pace as well, but he will do He'll great do in great in Rome. Roma, 100%. 100% he'll do great in Roma. लिवरपूल इन फॉर टीमो वर्नर, लिंक्स आ रहा है सोनू भाई, थॉट्स? जैसा ये लिंक है वैसा ही मेरा थॉट है भाई याद. भाई लक्ष्य भाई इससे ऑनेस्ट नहीं मिलता तेरे को। डू यू थिंक थॉमस टुचेल हैज गॉट इट टू बी इन द लेवल ऑफ क्लॉप एंड पेप इन कमिंग इयर्स? गाइस योर थॉट्स? Mm, mm. अब ये क्वेश्चन ना, ये थोड़ा मुश्किल है. He has won he He has has won the tactic. He has the tactical awareness to be, but I think he is very. I think he's very more. I think he's in a weird way much more temperamental than Pep मेरे and को Klopp. बट उसका एक इमोशनल टच नहीं है ज्यादा. मतलब एक होता है ना Yeah, कनेक्टिविटी प्लेयर टू प्लेयर. मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हम लोग क्लॉप को तो उससे रिलेट करते हैं, बट इवन पेप इज अ वेरी गुड मैन मैनेजर. yeah. He I gives mean, them that that Spanish I style can't, kiss on the face, I can't all think of that. a manager who would cry when Aguero was going and say that we don't want him to leave, and on the next day he would, on the day before he would say, "Hey, get lost." I mean, इतना मतलब emotional. थॉमस टुचेल नीड्स टू विन अ प्रीमियर लीग टाइटल टू बी इन दैट डिबेट। मेरे ख्याल से उस डिबेट में नहीं Oh, आता, of बट course. फॉर श्योर I, इन I द I नियर think I फ्यूचर। think Devish meant more of on a coaching base. I hope that's what he meant because I took it as that. I think on a coaching basis for sure, हाँ. but sometimes I think in the heat of the moment he loses his head and you can see it in the Chelsea performances. He sometimes over communicates with his players. They kind of drop out and then they get hit on the counters and it's very weird because technically I think like before a game starts I feel he's as good as Pep and Klopp, but when the game starts to happen I feel like in moments he has a lapse of judgment. He loses his mind a lot. Like I've बट noticed he goes mad, बट like टुचेल really mad. इन द बट नियर। फिर आप जज कैसे कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है ना. अगर आप ट्रॉफीज पे जज कर रहे हो तो फिर बात अलग हो जाती है. फिर बट दोस्तों लाइक तब दिस तो टीम। अभी टूचल नहीं है एकदम, क्योंकि यार I mean in 6 months आप he won a Champions League. No, I'm just एग्जैक्टली. saying he had 6 months. He had 6 months with the same Chelsea legend Frank Lampard with Frank Lampard's team, भाई मैं got them to Europe. But next year had a very not season. Maybe because he bought a certain player. Let's not name him. बट मैं तो ये कहूंगा कि भाई इन द कमिंग ईयर्स फॉर श्योर ही इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट नेम व्हेन इट कम्स टू द मैनेजर्स। भाई पेप क्लब थोड़े सालों में चले जाएंगे आई गेस सो, बट उसके बाद टूचल विल बी द गाय हु विल टेकिंग ओवर मेरे ख्याल से, एंड ही विल डू। हाँ, टूचल है, नागल्समैन है, ही माइट यू गो हैव टू थॉमस फ्रैंक.
And then there is Ancelotti who will never leave coaching. एंचेलोटी तो उसका तो च्युइंगम जब तक खत्म नहीं होगा वो खत्म नहीं होगा च्युइंगम नहीं डब्बे छोड़ेगा. कुछ. Where are you looking, brother? You, your team with managers of Van I Gaal, love how all the Rangnick, all Madrid, I love how Solskjaer. all the Madrid fans forgot about his failures at Chelsea, his failures at Everton. I just love it. I love how everyone forgot about it Nobody conveniently. talks about failures when you are the only manager to win all the 5 European trophies, and you are also the manager to win most European competitions with 3 बट different. टेक्निकली He got. टेक्निकली हम ये चीज भी कह सकते हैं कि एंचेलोटी इज ओनली एज गुड एज द टीम ही मैनेजेस. ही इज नेवर सक्सेसफुल इन अ टीम, यू नो, अ लो लेवल टीम. आई नहीं, मीन but एंचेलोटी ने कहां जीता? बायर्न में जीता. I like this. बायर्न विनिंग द बेस्ट लीग इन द बेस्ट टीम इन द लीग. then you can say the same for Pep मैड्रिड. Guardiola. हाँ, Yeah, तभी मैंने बोला, we इसलिए मैंने definitely सेम are बोला. going to say the same for Pep Guardiola. We are सब definitely सेम हम going पेप to गार्डियोला say के लिए the बोल रहे हैं. same for- मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब अगर आप पॉइंट रख रहे हो तब ये भी रख सकते हो कि यार जैसे हाँ. मोरिनो ने पोर्टो को जिताया या मोरिनो ने उस मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम को यूरोपा जिताया. क्लॉप डिड विद डॉर्टमंड एंड लिवरपूल. तो यार मतलब ऑफ कोर्स नो वन इज डाउटिंग. अब एंचेलोटी फैंस आके ये मत बोलना. एंचेलोटी इज वन ऑफ द Raktim has made ग्रेटेस्ट me very मैनेजर्स. sad. भाई Raktim has made me very sad. He has just told us the world rankings, and I saw England at 6, and I was like, "Oh God, get out, भाई get out." bias point. You can say the same for every manager. That's not a point. वही कह रहा हूँ मैं. Obviously, you can say the क्या? same for every manager. Well, no, because, नहीं, because नहीं, no, नहीं, no, you नहीं. can't say that with Klopp के every लिए हम manager बोलेंगे. because you can't say Jürgen that. Klopp. You नहीं. can't say that with Klopp. You can't You say cannot that say with that with Alex Mourinho. Ferguson. You can't say You that You with cannot say Arsene that with Wenger. Mourinho. You can't say that with Arsene Wenger. You क्या can't क्या say that बात with कर रहे हो भाई Mourinho. तुम? You can't say that with Arsene Wenger. क्या बात कर? नहीं, आप पॉइंट भी बोल देते हो But सबके लिए भाई- कह सकते हो तो वो गलत है ना भाई. बट यही यार मेरे ख्याल से तो एंसेलोटी बहुत अच्छा कर रहा था एवर्टन के साथ बिकॉज वंस ही लेफ्ट यू कैन सी व्हाट हैपेंड एट एवर्टन. they were facing relegation at some point of time. Some point, yeah, most part of the season they were facing relegation and just because that guy left. बट देखो वही है ना यार. यू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. अगर मेरे को अब 3 का तार निकालना तो मैं तो ये भी बोल दूं दैट कार्लो एंचेलोटी with arguably the greatest team ever to assemble lost a Champions League final where he was leading 3-0. Makes no sense. But then he But took his revenge. but 2007 में 2 साल बाद उसने फिर रिवेंज लिया. फिर तो से सी ओवर द टाइम कि आप सीखते हो चीजें. आप देखते हो कि हाँ भाई कहाँ मैं फिट, which teams complement me more, कहाँ मेरा ज्यादा स्टाइल सूट करता है. एंड फ्रैंकली मेरे को लगता है एवर्टन का जॉब उसने इसलिए इसीलिए लिया क्योंकि उसको और कोई But नौकरी नहीं we मिल रही थी और उसको चाहिए थी we नौकरी. can definitely all agree. Yeah, but I think we can definitely all agree that he shouldn't have taken the Everton job. हाँ. Hmm. That was Do you never think going to Neuer help changed the coaching meaning career. of GK? Yes, he did, by for sure. Suraj Ancelotti will be sacked this year, Yes, like yeah, after. absolutely. I mean, I've never Nitish- seen Nitish Meena. a worse goalkeeper than Neuer. Nitish Meena, yaar, I don't agree to what you are saying because of the fact that the other teams in the league are not as good as Real Madrid. Because in the 2015 season, Barcelona were obviously they had Emerson in their team, if I'm not wrong, और Atletico Madrid just won the La Liga उससे पिछले सीजन. तो ऐसा नहीं है भाई. इस सीजन आप देख लो एथलेटिको भी उतनी सॉलिड नहीं है, बार्सिलोना भी. both the teams are having problem and on the other hand Real Madrid have signed Tony Rudiger, Chouameni and they are the Champions League winners, they are the La Liga winners and what not. तो वो वाली बात है. the मतलब gap ये सीजन भी it would be a shock if Madrid does not win the league. हाँ, for sure. No, but they I'm are not being cocky here, I bhai. don't agree. I don't agree because Madrid are a team in transition. So you know. So we are in transition, brother. Again. Bro, what transition you are? Bro, What transition you are? midfield. I don't know. Midfield. By sensible. again, dude. Not again, By dude. Come on. after 2 years, you will not see Benzema. You will not see Cruz, Modric, and Casemiro. Bro, but we are talking about now. You can't talk about 2 years. By You this can't season, say you we are will. trans- This season, you will all. By last season, Transition. defensively, there was no one. There was no one. Half of the season, Carval नहीं खेला. No Varane, no क्या कहते हैं Ramos. Agreed. Mendy was also injured. But Come on, man. If you don't want to agree, then don't agree. That is some. you all voluntarily got rid of Ramos, dude. You all can't use it as an Not excuse Varane. after that. It Not makes no Varane. sense, dude. Not Varane. Dude, Varane didn't want to play under Ancelotti. See, I But tell you, this I don't know is- what you heard, right? I don't know what you heard. I will just tell you what I heard.
there were inside sources saying that Varane didn't want to play under Ancelotti. I don't know why, because I don't watch La Liga, so I don't understand the reference. But I believe the reason we got him to be to play under Ancelotti. Now, if you ask me why that is, I have no idea. No idea why that is. दोस्तों But थैंक that यू is what वेरी I was told. दोस्तों थैंक यू वेरी मच वी हैव गॉट टू 1.78 के भाई इतने दिन से हम लोग लटके हुए थे 1.7 पे तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट भाई लेट्स गो टू 2K एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू ऑल दिस क्या कहते हैं TCSB OG वाला एंड यू विल सी दिस फेसेस सोनू का एग्जाम है But नितिन Mank blank. You're telling me ages, right? You're telling me ages. In the league, you all have, I forgot his name here. You all have a आदित्य striker भाई ले रहा हूँ that तेरा is कमेंट 30 years old. Like you have a Mank भाई blank. You're saying Cruz 32, Modric is not a regular 37. भाई यार कम Like ऑन यार लेट Ronaldo मी is not a regular 38, dude. You can't just say the number. नहीं बिल्कुल आई No, अग्री you can't विद just say the number of the age अग्री like it means भाई something. लेट मी टेल The यू people are द elite athletes. They're different level of athletes. Too. भाई देखो सिंपल सी बात है सिंपल सी I बात mean, है Modric what is is not a transition regular let me ask athlete, you dude. this A regular what footballer. is transition according to you What is the definition of transition? according to you Perfect, tell me perfect. What is yes it? just बता दो नितिन भाई Okay, so can I ask you one question? Now that we got rid of Matic and Pogba, are we also in transition? I just want to know because then even I want to use this excuse, dude, from Matic this and season Pogba onwards. tell me Matic was the seriously your starter I have seen this season Manchester United But was Matic your I starter told you all. See, I भाई told you all he Varane wasn't. and But Ramos everyone played was. game in played game in and out भाई you cannot take Matic as a Pogba even No, Pogba but यार what but see, right, I when don't. I'm not Pogba and saying Matic Gareth Bale are going is fit. a part of transition. I'm not saying that. If I take Gareth Bale name, then you talk Gareth about all this. Gareth Bale is What playing is golf, transition dude. according to you? वैसे आदित्य भाई is saying disgrace. Pep won 4 Premier League in 6 years, 3 La Liga in 4 years, and Carlo has only मतलब Carlo has only won 5 leagues, one in each. I mean, I mean, भाई आप बताओ मुझे क्या what is transition according to you Nathan भाई? Then I will tell see, you. see. To me, a transition, right? I don't know. For me, I feel my midfield's in transition. We have not had a proper midfield in I don't know how many years. Years, okay? So I'm not even counting what the ages are or anything. I don't think we have had a solid midfield. Like how you all have three in and three out, you all can straight swap six players. I don't think we've had six players in at least 7 years. At least in 7 years. Okay? Six players to just swap them out. Just to swap them out. Simple. I don't think we've even had that. Okay? Secondly, Cruz is 32. Dude, 32 is not that old. Casemiro's 30. 30 is not that old. Modric 37, 100% is old. But But he's a Tony Cruz different is level, not dude. He's just different Tony Cruz is level. not among all those players who are going to stay in this club or who want to play football till they are 37, 38. He has already said that he will Yeah. retire as soon. He has already retired for international football, and he has Yeah. not renewed with Real Madrid this season, saying I don't want to become a burden to for Real Madrid. So 32 for Cruz is old and you are now saying Really? I'm not saying the whole team is in transition. I'm saying that last year the defense was in transition. Nobody can people are not agreeing to the fact that Real Madrid was in transition just because Yeah, Real because, Madrid have won but dude, Champions League. Real Madrid you can people would not have hold been on. able to I agree with you, Jan. But we have proof here. I have told you when I heard someone say our midfield is old and we are in transition, I laughed. I laughed. I said, what are you talking? Your midfield is elite. What transition? Transition where? Who transitions an elite midfield just because of their numbers next to their name of how old they are? That is absurd. It is your ability to play or not play. Point blank period. That's it. It starts and stops there. This is football. This is not chess, dude. Okay. A. B. When someone told us on the chat that Liverpool were 3-1 favorites, did I or did I not laugh in front of all of your live on this channel? I laughed to 3-1 favorites. 3-1, dude. That's mad. That's insane. 3-1 underdogs, dude. भाई एक बार ले To रहा हूँ me, चार्ट भाई I don't see a transition. I see players that need to be swapped out because they cannot play at that level anymore. Now रैकेटिच I don't know if they are going. Now I don't know if they are going to be
transition lump sum. I do not know if one is going to go after the other over the years. But as far as I'm concerned, भाई मेरे ख्याल if से you take out Cruz and put Kamavinga in there, just for example, like that midfield doesn't need to be changed, dude. You all have straight swaps. You all can do this for another five thanks to years. good transitional activities and transitional transfers by No, no, the. but what I'm trying to say is there's nothing wrong with your starting three. They can play. They can go another season for sure. Yeah. I think so. I believe So that. I don't your know if everyone according to else you, believes that. transition means when the players are old enough and they cannot Bro, call. yeah, it is football, dude. It is a physical sport. You have to be understanding of I that. You in my can't play. according to my transition is when there are when suddenly there are so many words in your team, not क्या कहते हैं, not respect to the age or the quality of the player, but there in मतलब in reality there are voids in your team that needs to be filled, and because most of the players that were in your team have gone due to any reason, Yeah. because अच्छा when Cristiano Ronaldo left, okay, the very next season, people said Toni Kroos, Modric, and Casemiro cannot play anymore because we lost 4-1 to Ajax. We had the worst start to La Liga in like 18-20 years, and we were trophyless that season, that very season. The people said कि भाई Kroos now the Real Madrid is in transition because they have to fill the gap of the BBC. Gareth Bale was not playing, Ronaldo went, only Benzema was there. So that was some that Like is. now Aresh have put on a interesting name. When did United come out of transition ever? They haven't, dude. And I'm not, because Nitesh is like making a joke, right? So now Suraj, United has been into transition since Ferguson left. I just want to point one really fun fact here, right? When Moyes came, he got rid of Ferguson's players. Okay. Then when Van Gaal came, he got rid of Moyes' players. Hmm. Then when Mourinho came, he got rid of Van Gaal's players, or he didn't play them. And Ole Gunnar Solskjaer literally had all the rejects, no, from the time David Moyes has been. So when they make a joke like they have been in transition since Ferguson left, yes, because all the players that actually won something either the new coach's style and they sell them. या So मुझे we are actually in transition, and that's why someone said earlier today, if United finish fifth or sixth, will they sack Ten Hag? Dude, I'm telling you right now, before a ball is kicked, much like I said, Lukaku's not going to score 20 goals last season. If they sack Ten Hag without giving him a full season, no, we are screwed. It does not matter who's in our team. Our club, simple. It does not matter who's playing. It does not matter who's scoring goals. It does not matter. If they don't give Ten Hag at least 2 years, they give Ole Gunnar Solskjaer 2 years, they give Mourinho 2. If they don't give him 2 years, no, they will just leave it. मैं मेरी मैं Simple. जस्ट रेस्टिंग माय केस, आई जस्ट वांट टू से दिस देखो मैं रेस्ट हाँ करता हूँ केस देखो मैं बताइए, एग्जैक्ट आंसर बताता हूँ लव यू. कि तुम दोनों ने अपने अपने डेफिनेशन बताए ट्रांजिशंस के और दोनों ही सही हो द डिफरेंस इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एक होता है कि जैसे सपोज मैं लिवरपूल का एग्जांपल लेता हूँ वी सोल्ड सुआरेज एंड आफ्टर सेलिंग सुआरेज जो पैसे हमें मिले उससे वी वॉट 2-3 फॉरवर्ड प्लेयर्स दैट इज आफ्टर अ प्लेयर completely left our team we got in new players. The second thing is like we did with Luis Diaz playing on the left wing now or maybe Darwin Nunez center forward कि हमारी टीम में फर्मिनो अभी भी है हमारी टीम में लास्ट सीजन सादियो माने था तब भी हमने एक लेफ्ट विंगर साइन करा टू ईज इन द प्रोसेस द सेम वी डिड विद एंडी रॉबर्टसन द कि जब सेम थिंग. आप एक प्लेयर को आप टाइम देते हो एक सीजन कि वो आपको सारे मैचेस नहीं खेलने हैं ऐसा नहीं है कि और कोई है ही नहीं जो आपका सीनियर प्लेयर है वो खेलेगा यू विल गेट योर मिनट्स अकॉर्डिंग टू द मैनेजर्स और यू नो द लीग स्टैंडिंग जैसे भी उस हिसाब से so that is another type of transition. Now what Madrid has done in the midfield is the second type one कि जहां हमारे main front three हैं we also brought in three young players who could learn from them हाँ who could play alongside with them. So that is a smoother transition when compared to the other one. And modern football में जो ये transition है इसके success rate काफी ज्यादा है हमने ज़्यादा है. बहुत सारी teams को देखा है करते हुए पहले होता था वो कि हाँ जब जब ये प्लेयर गया तभी हमारा नया प्लेयर आएगा बट आजकल ऐसा नहीं है नाउ वी हैव दिस टर्म यू नो अ साइनिंग फॉर द फ्यूचर a young project पहले नहीं था ये because we are bringing in players who is not there to play the whole season in his first season Konate he was not brought in to play the whole season हमारे पास तीन सेंटर बैक थे तब
जो गोमेज था, वैन डाइक थे, जोएल मैटिप था, बट स्टिल ही वाज brought in so that he could be eased it into the team, तब आराम से सेटल हो जाए। तो वो चीज मैड्रिड ने बढ़िया करी है। तो मैं अभी भी बोलूंगा कि मैड्रिड आर इन ट्रांजिशन, बट अ स्मूदर पार्ट ऑफ इट, हाँ वेयर भाई दे यार, वुड नॉट फेस। देख मैं और तो यही एक रीजन था कि तुम चैंपियंस लीग में अच्छा परफॉर्म कर पाए। भाई अगर मैं तुम तो तब साइन करते कामाविंगा, जब तुम्हारी टीम में मॉडरिच भी नहीं और क्रूज भी नहीं है, तो लड़ तो लेते आई डोंट थिंक द सीन्स वुड हैव बीन द सेम भाई। जो मैं था तो लास्ट मैं सीजन। तो ये बात कहूंगा कि पीपल आर नॉट रेडी एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रियल मैड्रिड वर इन ट्रांजिशन बिकॉज रियल मैड्रिड वॉन द चैंपियंस लीग एंड द ला लीगा। अगर हम नहीं करते तो क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि रियल, वो लगा नहीं ना, क्योंकि वो हाँ लगा नहीं लगा नहीं। ट्रांजिशन है। भाई एक ये क्वेश्चन इशू है। है, थियागो भाई ने पूछा है तो मैं पूछता हूँ, रैकिटिच एंड मुलर आर अंडररेटेड गाइस? इंडीड। I mean, I don't think Muller is underrated. मेरे को लगता है रैकेटिच और मुलर को सेम ब्रैकेट में रखना ही गलत है। सुन लिया भाई आपने मुलर थियागो। मुलर इज एटलीस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ रैकेटिच। Yeah, that's what I'm saying. I don't think Muller is underrated. It would be insane to underrate Muller after his. I mean, I know he played for मुलर Bayern Munich, but मुलर इज नॉट अंडररेटेड, मुलर इज नॉट अंडर अप्रिशिएटेड, ही इज जस्ट लेस फेमस। यस ही इज लेस फेमस probably. एंड सी इज अंडर अप्रिशिएट। एंड हाय अब एक साल का टाइम आउट दो भाई। नहीं यार कोई नहीं दे रहा भाई, तूने यार नाम चेंज कर लिया वापस से, बट ठीक है। बेस तो दोस्तों इसी के साथ यार थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड विल बैक टुमारो फॉर श्योर एंड विल बी बैक फॉर अ इंटरेस्टिंग एपिसोड जो मैं बनाने का सोच रहा था, एंड डेफिनेटली नाउ आई विल मेक दैट। तो उसी के साथ बाय बाय दोस्तों, सी यू टुमारो। अला मद्रिद इना दमास। एंड जब तक फुटबॉल नहीं है प्लीज़ शो योर सपोर्ट टू TCSB एज वेल। लेट्स गो टू 2K। बाय बाय, जिंदाबाद, जय हिंद। पोल का रिजल्ट तो दिखा यार भाई, रियल मैड्रिड जीत गई है। आई डोंट नो हाउ बट रियल मैड्रिड जीत गई। सस्ता बुनोची आप जैसे कह रहे हो सकता है उसके आदिदेव गुरु ज्ञान को कह रहे थे भाई आप सस्ता, वो भाई शिट मैन। मेरा लास्ट भाई बारसा से सिर्फ बर्बाद किया है ब्रेडफेड, जब ओबामैंग नहीं आया था तब सिंगल हैंडेडली गोल मार रहा था भाई। वो इंजर्ड हो गया ना बहुत तरीके से भाई। रियल मैड्रिड 55%, बार्सिलोना बोथ 11%, वन ईच 33%। ओके दैट्स वाज द थिंग। बाय बाय दोस्तों, प्लीज़ डू सपोर्ट TCSB एंड लव यू ऑल। बाय बाय।